Namaskar everyone, and welcome to day 9 of this 24 days Self-Actualized Leaders Network Global Summit 2021. The theme for today's sessions is clean water and sanitation. Goal number 06 of United Nations Sustainable Development. It's an irony, a very pathetic situation, very difficult to digest thing that even today in 21st century, where we are searching for water outside the planet to explore the possibilities of human life or other forms of lives over there, it is highly ironical that there is no clean water and sanitation facility for people of this planet that we are able to create. So today's focus would be to listen from the experts what all challenges are there in order to provide clean water and sanitation facility to all 780 crore people on this planet today. So unlike every day, we will start today's session with some thoughts, quick thoughts from the speakers of the July edition of Self-Actualized Leaders Network Global Summit. Thank you, Mr. Chandel, for this very interesting program. Let me congratulate you and also appreciate your efforts in creating leaders. And I'm very happy that you're talking about the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals is defined, developed, and implemented under the leadership of the United Nations. I'm truly beholden to all the founders of this project, the YugParivartan. Indeed, as a member of the Baha'i community for the last 46 years and as one of its national trustees for more than 3.5 decades, it gives me indeed great pleasure and joy. First, I would like to say it is my honor to be here for such a prestigious panel, Self-Actualized Global Leaders, that this network of YugParivartan. This is such a, we can say, the beginning of a revolution. ये जो पूरा कंसेप्चुलाइज किया गया है हितेश चंदेल जी द्वारा, वह बहुत ही अभिनंदन के योग्य है। अब तक के जितने भी आयोजन हुए हैं उसमें एक अजीब, एक अलग किस्म का आयोजन है जो भीतर से उद्वेलित करता है कि हाँ कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। Sustainable Development Goals is a mission of the world community. The leaders of the world came together to actually agree to work on these issues. So we all know that the Sustainable Development Goal was adopted in 2015 with a aim for a time duration of 15 years, and it will last in 30 or 15 years. So this project of YugParivartan, in fact, the more I study and try to understand, it in fact is providing more and more inspiration, and I hope that this very ambitious task that has begun by our chief mentor, Mr. Hitesh Chandel, will find a very powerful and positive consummation, whereby truly the transformation of the planet as we intend and as we wish will happen. So this is, I really would like to congratulate you first for this wonderful initiative where you are creating a society of progressive mindset people. मैं प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का बहुत ही आभारी हूँ
जो इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, जबकि क्योंकि कोई भी गाइडलाइन आती है या कोई एम आता है जैसे स्मार्ट सिटीज है वगैरह या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कारण एक टारगेटेड रोड मैप मिल जाता है, नहीं तो हैफेजार्ड इनिशिएटिव हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव नहीं होते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्मार्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करके बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और हमारे पहले के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपनी बात कही है, बहुत सारी बातें कही उन्होंने और सोचने के लिए विवश किया है। यहाँ सच में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर कुछ होना चाहिए, न कि भारत के स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर। Really, it is a very amazing work you people are going to do. If we are global leaders, we need national leaders. If we are national leaders, we need state leaders, local leaders. To develop those leaders, we need programs designed that we organized today. So I'm really compliment and congratulate you for doing this excellent program. And I'm sure a leadership will emerge from such mammoth and necessary efforts as we are doing today. ऑल्दो 17th जो गोल है वो इसी बात को लेकर है कि बाकी 16 गोल को कैटर किया जाए, बट जो गोल जीरो का ये जो प्लान आपने किया है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट एंड दिस एफर्ट गोना चेंज द पैटर्न ऑफ यूएन वर्किंग. दिस कैन क्रिएट एन अलाइनमेंट अमंग द डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस. So I hope you succeed in your mission. I offer you my best wishes, and I'm sure the self-actualized leadership network that you are doing is like actualizing the reality through a networking is something which will really result into making it happen. और ये जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडरशिप नेटवर्क ग्लोबल समिट क्या, इसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने जैसे कहा है कि हम सपोर्ट भी करेंगे इनिशिएटिव्स को, प्लेटफॉर्म भी देंगे, उनके बारे में जानकारी जनता तक मिल जाएगी. तो मैं हितेश चंदेल जी का आभारी भी हूँ कि यह जो इनिशिएटिव लिया इसका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ. हितेश जी, आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ. I hope you would have got some glimpse of the spread of this network and its importance for sustaining this planet for future generations. More content will keep coming on all of our 3 official YouTube channels. There are several affiliate channels as well, on which dedicated discussions, debates, fact findings are regularly published. As SALN is part of Project YugParivartan, and Project YugParivartan covers each and every problem of this planet under its scope of work. It is important that people from various different domains, expertise, and influence level should be integrated into Project YugParivartan Synergy Platform. So all the audience who are carrying any speciality, anything which can make them a self-actualized leaders in their domain or in any generic leadership domain, do contact us on the number that was given in the video. You can share your contact details in the chat box also, so that we can contact you and help you integrate with the overall scheme of things.
When the vision is bigger, there is a space for everyone. So even if you want to become a prime minister of a country or a Vishwaguru or Vishwa Samrat, there is a scope of development in Project YugParivartan. So this is also a kind of an invitation to all of you to not just remain at the fence, but come into the main field and play the game of Project YugParivartan. So with this, we'll now start with the Project YugParivartan Synergy Platform, the aim of which is to bring people closer. Ultimately, we have to arrive at a situation called as Ekatmata, the oneness of soul, all-pervading soul that is keeping us energized, that is making us chetan, that is making us conscious. So once we arrive at that level of consciousness where we feel ekatmata with each other, then everyone's problem becomes our problem, which means we take accountability of every problem on this planet. And that's the maximum potential that each human being is carrying in this beautifully designed human machine. But due to the ignorance about those faculties, features, accountabilities, and potentiality, we just let it go waste. It's a colossal waste of human resource potential unless we arrive at our self-realized potential and convert that into self-actualized actions. So Self-Actualized Leaders Network is that network which is bringing self-actualizing people from all domains together and giving them an intelligent system through which they can manifest their avatar and do the act of God. So let us now prepare for the meditation. Project YugParivartan Synergy Meditation. You may be doing in your personal lives. The idea here is to sow a seed of Project YugParivartan need into the minds of all the participants and call their soul to join hands with the Project YugParivartan Synergy Platform so that eventually everyone on this planet can work towards YugParivartan and taking the world towards the golden age. There are several forums that we are creating to make that happen. And SALN or Self-Actualized Leaders Network is one of the important forums that are being created for this purpose. Now I would request everyone to be prepared for the meditation. Your neck and spine straight, eyes gently closed. For a few seconds, watch the activities happening within your body and its surface. If you feel any sensation or vibration, just observe that without getting involved. Feel as if you are separate and the body is separate. Your true identity is not the body. But because our human machine, which has 4 dimensions,
body, heart, mind, and soul, all of which work in tandem and look inseparable. But the fact remains, they are different faculties and can be observed separately. In the normal consciousness, we feel as if we are the body. But in reality, it is not our identity. When we die, the body dies. But that doesn't stop our existence. At the surface of the body and inside of the body, every organ is working as per the role assigned to it. Now for few seconds, bring your attention towards your breathing. It's an activity which works 24/7 by 365. Whether you are in a waking state or sleep state or dreaming. Body keeps working. Watch the breathing in and breathing out. Deep, calm, rhythmic breathing is going on. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Now bring your focus towards your mind. Watch all its activities, all sankalp, vikalp, thinking, processing, feeling. Watch everything. Just observe. You don't have to do anything. Everything within you is now at peace, calm, vibration free, silenced. Keep observing yourself, your being. Now we will start the seeding. Seeding of the Project YugParivartan
बीज मंत्र, the need statement of Project YugParivartan, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Whenever and wherever there is a decline in the value system, it becomes imperative that all those people who are self-realized should take the ownership, accountability of fixing all the defects of collective human consciousness, due to which pain is coming into people's life. They don't wait for anyone else to ask them to do it. They take accountability of doing it themselves. We are passing through the same situation now, wherein a grand change is urgently required. And for this purpose, everyone has to come forward and do their bit by invoking their self-actualized consciousness. The consciousness from where you can see the truth, and from where you can take those decisions which will remove the pain from people's life. Ask yourself who you are, why you are, for what purpose you have incarnated on this planet Earth. Your soul will give those answers which will take you towards your maximum potential. Think about your origin. Relate it with your current life situation and ask few questions. Are you here for just doing simple things?
Stay in this mode, keep introspecting for some time. Now slowly, after this seeding exercise is done, we will come back to our normal consciousness in which we generally live throughout the day. Bring your focus back to your mind. Activate it. Now bring your focus to your breathing. Keep taking long, deep, calm breathing. After 2-3 rounds of deep breathing, bring your attention to your body. From top of the head to the bottom of your feet. Activate each and every organ. Now bring your focus to your palms. Rub them together and gently massage your eyes and your face, the organ, and the whole body. And with 4 or 5 blinks, open your eyes. I hope today also there would be some progress towards coming closer to each other. This synergy meditation is actually sowing the seeds and nourishing us to understand the concept of ekatmata. As soon as we start feeling ekatmata with each other, we start becoming ekmat as well. We'll start accepting the same vision and same mission of Project YugParivartan, and then ekmanta and ekjutta will follow the suit. So that way all our soul, minds, hearts, and bodies will start aligning towards the biggest mission that the mankind can envision, Project YugParivartan. So with this, I would like to invite my colleague, Mr. Arvind Tiwari, to invite our first speaker of the day, chief guest, Mr. Gopal Krishna. Arvind ji. धन्यवाद हितेश जी। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा को होस्ट नहीं है इस वाले में, शेयर कीजिए। हाँ जी, अब ओपन कीजिए। जी यस सर, धन्यवाद हितेश जी। हमारे बीच गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आ चुके हैं और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी इकोनॉमिक अफेयर्स
हैं श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आर्थिक मामलों के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के एक साथी सदस्य भी हैं। वह एक आर्थिक विचारक हैं और अखबारों, वित्तीय पत्रिकाओं के लिए बड़े पैमाने पर लिखते हैं और संगोष्ठियों और सम्मेलनों में व्याख्यान देते हैं। वह इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन IPF के कोषाध्यक्ष और एक ट्रस्टी थे। वह वित्त मंत्रालय द्वारा MSME क्षेत्र पर टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। वह सेंट्रल काउंसिल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में भारत सरकार के नामित हैं और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक और बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य। वह नमामि गंगे पर जल संसाधन मंत्रालय के सलाहकार भी। 13 वर्ष की छोटी उम्र में गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने 1975 में आपातकाल के दौरान सत्याग्रह में भाग लिया और 3 महीने तक जेल में रहे। उन्होंने जलाधिकार, नागरिक मंच, श्री जी गौसदन, दुग्ध सहकारी आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने काला धन और रिश्वत विरोधी संहिता पर एक विधेयक का मसौदा भी तैयार किया है। ये हैं हमारे अपने गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल जी, आपका हम स्वागत करते हैं इस मंच पे पुनः, और आपसे निवेदन है कि आप आज जल के ऊपर अपने द्वारा किए जा रहे कार्य और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो यूनाइटेड नेशंस के जो लक्ष्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। वेलकम गोपाल जी, वेलकम। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। शायद कुछ टेक्निकल चैलेंज है, मैं एक बार कॉल करता हूँ ना। अभी गोपाल जी कुछ 1 मिनट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तब तक मैं थोड़ा यूनाइटेड नेशंस के इस गोल के बारे में चर्चा कर लूं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन is one of the basic survival needs. If this is not fulfilled, it is a collective shame on humanity that even though we are progressing to reach to other planets, satellites, moons and all, but we are not able to provide clean water and sanitation facilities to all citizens of this planet. So somewhere, humanity as a whole has got a misdirection, which needs to be corrected by bringing focus on all those issues which matter the most. So United Nations, of course, they are doing their job of drafting all these goals. And of course, we believe that they would not leave any stone unturned to meet these goals by 2030. There was some news from United Nations that due to the corona related setbacks to the economy and the growth, it will be difficult to meet the goals by 2030. So we thought that if citizens of this planet come together, join hands into a synergy platform and become a complementary force to United Nations, then probably we get a better chance to meet these goals still by the same deadlines. So as part of SALN, we are integrating all those self-actualizing people who are living their lives in a meaningful way, purposeful way, and in a mission-oriented manner, so that they can become 1 + 1 = 11 and 1 + 1 + 1
111. So we thought of starting these global summits and launching all the 17 UN SDG goals platforms, which are now shaping up very well, and we are getting an overwhelming response from experts of all these domains to join hands with us. So just after the summit, we will formalize several such relationships. And we will also launch these platforms to have a regular discussion, manthan, and fact-finding, data collection, whatever it takes to meet these goals. So let me just quickly check if Gopalji has come. Yes, I am there. यस गोपाल जी, मैंने आपके दूसरी वाली आईडी पे भी को होस्ट कर दिया है, तो अब आप वीडियो वगैरह ऑन कर सकते हैं। मैंने ज्वाइन कर लिया है, आई हैव ज्वाइन। हाँ जी, तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए और आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको, हाँ हो गया। हाँ जी, आ गया। हाँ, आई एम विजिबल। यस यस, यू आर विजिबल एंड ऑडिबल बोथ। यस। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं मिक्स लैंग्वेज में बोलूंगा, है ना? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो सभी को डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज यहाँ आप लोगों से बात करने के लिए बुलाया, मौका दिया। और ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ऑल लीडर्स प्रोग्राम है, इसमें मेरा दूसरी बार यह भागीदारी आज होगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, पहला जो प्रोग्राम हुआ था वह भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और पानी क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसमें 2012 से इस पे व्यापक रूप से जलाधिकार फाउंडेशन एक संस्था हम लोगों ने बनाई है, उसके अंतर्गत हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और 2012 में जब यह जो नेशनल वाटर पॉलिसी तीसरी आई थी, तब ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी के ऊपर हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया था। और यह जो आज का विषय है, क्योंकि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत यह जो 6th गोल है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यूनाइटेड नेशंस का, यह एक महत्वपूर्ण पहले हर देश के विकास और उन्नति के लिए। मैं पीछे अभी एक कार्यक्रम, हमारी एक किताब है जो पब्लिश हुई है मेरी और मेरी बेटी की, युतिका अग्रवाल की, ब्लूम्सबरी ने पब्लिश किया, उसके लॉन्च प्रोग्राम में था। तो वहाँ पे एक बात आई थी कि लेट देयर बी वाटर, एक इजराइल की बहुत फेमस किताब है। तो उस पुस्तक में भी इजराइल के डेवलपमेंट, विकास के लिए पानी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, वह पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है। हमारी पुस्तक भी अर्बन वाटर मैनेजमेंट को बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च डॉक्यूमेंट है, जो कि डील करती है 8 वर्ष का काम है जो उसमें आया है। तो मैं कुछ बातें जो हमारे रिसर्च में, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करने में सामने आई है, वह आपके सामने इसमें रखूंगा। शुरू में मैं कुछ देर बोलूंगा, फिर उसके बाद एक छोटा सा पीपीटी है और एक वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ग्राउंड लेवल पे जो हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं, किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है 4 मिनट का और एक 10 स्लाइड की पीपीटी, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ये जो क्लीन वाटर है, जब भी जगह जगह पे जहाँ पे भी हम गए हैं, तो यह क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह बात यूनाइटेड नेशंस के भी ध्यान में आई है, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में उन्होंने लिया है। और भारत के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स है यह की,
क्योंकि इसके बगैर हेल्थ जो है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बगैर अगर कोई भी कंट्री सोचे कि हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर लेंगे, हमारे सिटीजनशिप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वह बहुत असंभव टास्क है और वह पॉसिबल नहीं है। अगर आप समाज में हर व्यक्ति को स्वच्छ जल, पीने योग्य पानी उपलब्ध करा पाए और सैनिटेशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था कर दें, तो बहुत सारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हेल्थ का खर्चा होता है सरकार का भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, वह भी कम हो सकता है। तो इसकी जितनी इम्पोर्टेंस हम आके वो कम है। और मैं हितेश चंदेल जी का और अरविंद तिवारी जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी बात यहाँ रखने के लिए मौका दिया। पोस्ट कोविड स्थिति में अब हेल्थ की इम्पोर्टेंस हम सबके सामने बहुत अच्छी तरह उजागर हो गई है कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो जीवन में देश कितना भी प्रगति कर ले, व्यक्तिगत सुख सुविधाएं, लेजर, ये सब बेकार हो जाते हैं और हेल्थ एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जीवन यापन का, वह पूरा होना चाहिए। इसमें अगर हम मैं क्लीन वाटर के ऊपर फोकस करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे ध्यान में आती है, जो हम लोगों को देखना चाहिए अपने दैनिक दिन के जीवन में, वह है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं पानी के ऊपर, पीने योग्य और जो हाउस होल्ड वाटर कंजम्पशन है, जिसमें हम बेसिक नीड्स वाटर को लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस के या इंटरनेशनल पैरामीटर्स जो हैं, उसमें जो हाउस होल्ड वाटर कंजम्पशन एक महत्वपूर्ण पहलू है क्लीन वाटर के लिए, और उसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है, डे टू डे यूज खाना बनाना है, जो डेली जो स्वच्छता के लिए घर में आवश्यकता है वह, और कपड़े धोना या क्लीनलीनेस, या जो बेसिक जो आवश्यकता है वह सारे हाउस होल्ड वाटर कंजम्पशन के अंदर आते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी क्लीन वाटर के अनुसार होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। दूसरा, इसका जो उपयोगिता बहुत बड़ी है वह है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। उसका पैरामीटर, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी उसकी अलग है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पानी की बहुत प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, तो इनकी क्वालिटी, अवेलेबिलिटी अलग होती है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे क्लीन ड्रिंकिंग हाउस होल्ड वाटर फॉर कंजम्पशन। तो इसमें अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसके यह जो लक्ष्य है अपना, जो 6th लक्ष्य है यूनाइटेड नेशन का, जिसको भारत ने भी अडॉप्ट किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसको सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। जहां तक आप सारा लिटरेचर पढ़ते होंगे, देश में सब जगह पे सब लोग, सब प्रबुद्ध लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया में बहुत इंफॉर्मेशन है। पृथ्वी में देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट जो है 70% ऑफ आवर अर्थ है में पानी की अवेलेबिलिटी है, और लिविंग बीइंग्स में तो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी है। लगभग 90% ह्यूमन बॉडी, बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो कंपोजिशन है वह पानी के द्वारा है। एबंडेंस है पानी की, लेकिन जो फ्रेश वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर है, यूजेबल वाटर है, जिसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, उसकी शॉर्टेज है। वह उसकी अवेलेबिलिटी मात्र 3% है। 97% जो पानी की पृथ्वी पे अवेलेबिलिटी है, जो 70% पृथ्वी पे अवेलेबिलिटी कंपोजिशन है पानी का, उसमें से 97% is not very much usable because of it is present in the ocean and not usable in that form. तो इसलिए हम लोगों को इतनी अबंडेंस होने के बाद भी, पानी की उपलब्धता होने के बाद भी, अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो यह जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, ड्रिंकेबल वाटर की अवेलेबिलिटी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पानी के अंदर, इज इश्यू ऑफ मैनेजमेंट।
क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी 3% भी सफिशिएंट है। पृथ्वी जो है वो वाटर स्ट्रेस वैसे नहीं है ओवरऑल लेवल पे, और भारत तो वाटर स्ट्रेस्ड है नहीं। भारत में पानी की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है और 2050 तक तो ये अबंडेंट वाटर सब अवेलेबिलिटी है। लेकिन जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वह बहुत वेरिड है। कुछ एरियाज में रेगिस्तान है, कुछ में पानी का ओवरफ्लो होता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत पानी हो जाता है, पहाड़ों पे पानी की बारिश बहुत होती है लेकिन बह जाता है, सॉइल इरोजन काफी हो जाता है, रेगिस्तान में नहीं है अवेलेबल। केरला में बहुत लो लेवल पे पानी ऊपर अवेलेबल है, कई जगह डीप अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो एक तो रीजनल ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक प्रॉब्लम है, एक है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी। बारिश के दिनों में खूब पानी है, लेकिन फिर जब समर आती है या एक्सट्रीम विंटर आ जाती है तो एकदम पानी की कमी हम लोग देखते हैं। तो रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका इक्विटेबल नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ क्लीन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसाइकलिंग भी इसकी जरूरी है, क्योंकि वाटर जो है इट इज अ रिसाइक्लेबल। ऐसा है कि आप यूज करेंगे, उसको डिस्चार्ज होगा, वो पॉल्यूट हो जाएगा, उसको फिर इवेपोरेशन होगा। इट इज नेचुरल रिसाइकल भी है और ह्यूमन रिसाइकल भी होता है। तो नेचुरल जो रिसाइकल जो होता है पानी का, और ह्यूमन रिसाइकलिंग पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, कम करने का है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है, इसमें भी मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। तो मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्लीन वाटर का, पोर्टेबल वाटर का, एग्रीकल्चर वाटर का, इंडस्ट्रियल वाटर का, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसलिए अर्बन वाटर मैनेजमेंट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू फॉर एनी गवर्नमेंट और एनी कंट्री। एंड विद दिस देयर आर सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो इन। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं आपके सामने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसके आपके सामने रखूंगा, जो एक्सटेंसिवली वी हैव डेल्ट इट इन आवर बुक्स, वाटर एंड एलिमेंट ऑफ लाइफ, कंजम्पशन बाय द मार्जिनलाइज्ड एंड द प्राइस सेंसिटिविटी। तो इसमें वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो अराइज होते हैं, इसके कारण जो मैंने अभी आपको ऊपर के विषय बताए, वह है कि इक्विटेबल एक्सेस नहीं है। उसमें मार्जिनलाइज सेक्शन, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हम देखते हैं, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी देखते हैं, उन लोगों के पास पानी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्लम एरियाज में मैं जकीरा गया, अशोक त्रिलोकपुरी और कई एरियाज में हम गए जहाँ जामिया नगर है, जहाँ पे पानी की वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शंस को पानी की अवेलेबिलिटी इज अ वेरी बिग चैलेंज। बहुत सारा उनका टाइम पानी को फेच करने में, घर में महिलाओं को वो पानी को घर तक लेके आने में और उसको क्लीन वाटर को उनको प्राप्त करने में बहुत सारे रिसोर्सेज उनके लग जाते हैं। तो इक्विटेबल एक्सेस नहीं है कई क्षेत्रों में। दिल्ली के हम लोगों ने एक्सटेंसिवली हमारी बुक में रिसर्च किया है, 6 एरियाज में रिसर्च किया है। तो जैसे वसंत कुंज है या साउथ एक्सटेंशन है, जो एफ्लुएंट प्लेसेस है, तो इसमें इक्विटेबल एक्सेस सब क्षेत्र में नहीं होता। दिल्ली अगर एज ए केस स्टडी ले तो जकीरा है, जामिया है, त्रिलोकपुरी है, ऐसे सब एरियाज में इसकी अवेलेबिलिटी इज अ बिग चैलेंज। एंड जो दूसरे एफ्लुएंट प्लेसेस हैं उनमें अलग है। तो इक्विटेबल एक्सेस इज वन कॉन्फ्लिक्ट which the urban water management has to resolve. Then there is a conflict of competing uses. जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चर में आवश्यकता है, इंडस्ट्री में आवश्यकता है, पीने में, खाने में, कपड़े धोने में और क्लीनलीनेस में। तो जो कॉम्पिटिंग यूजेस हैं पानी के, उसका अलाइनमेंट, उसका एलोकेशन, यह भी एक सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर तीसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है पानी में, वह है क्वालिटी ऑफ वाटर। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा कि पानी अवेलेबल है लेकिन सैनिटेशन की लाइन के साथ ही वो पाइपलाइन लगा दी। जैसे त्रिलोकपुरी में हम लोगों ने देखा कि वो जो नालियां हैं जिसमें कि डिस्चार्ज वाटर जाता है, उसी के अंदर पाइपलाइन, क्योंकि जगह
जगह नहीं है, 3-3 फुट की गलियां हैं बीच में और ऊंचे ऊंचे मकान बना दिए दोनों तरफ, तो वह उन नालियों के अंदर ही उन्होंने पाइपलाइन बिछा रखी है फ्रेश वाटर की, तो इंटरमिंगलिंग हो जाता है, तो क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है और फिर सप्लाई में भी क्वालिटी काफी खराब है। तो क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी तीसरा कॉन्फ्लिक्ट है। चौथा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अब पॉलिसी लेवल पे विश्व में आ गया है, जिसको हम कहते हैं कमर्शियलाइजेशन। और यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो कि इस पानी के अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, सोशल वर्कर्स हो, पॉलिसी मेकर्स हो, डिसीजन मेकर्स हो, इम्प्लीमेंटेटर्स हो, जो पानी की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, पानी के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, वह है कमर्शियलाइजेशन। एक पॉलिसी लेवल पे एक बहुत बड़ा एक वैचारिक कई सालों से चल रहा था, जिसपे हमने एक्सटेंसिवली काम किया है, वह है कि जब पानी के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, पानी की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करना है, तो इसका कंजर्वेशन होना चाहिए, पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, और जो ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है, जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, हिमालय बहुत बड़ा इसका सोर्स है, लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, तो इनका जो प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर की आवश्यकता है। तो इस कंजर्वेशन के लिए, कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति लोगों के मन में है कि प्राइसिंग, कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए पानी का। यानी अगर आप प्राइसिंग कर देंगे तो वह कंजर्व करेगा। और इस पे मैं जरूर आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूं कि जैसे हमारी पुस्तक में, यह वाली जो पुस्तक है, इसमें 2 विषय हमने बहुत एक्सटेंसिवली डील किए हैं। वह है कि वाटर का जो प्राइसिंग है, रिसर्च है, प्राइसिंग अगर आप करेंगे तो, क्योंकि पानी का जो खर्चा है किसी भी परिवार का या परिवार का, आज के समय में वर्तमान प्राइसिंग लेवल में वह बहुत कम कंपोनेंट है जो वो पानी पे उसका खर्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे वह उसकी इनकम लेवल बढ़ती है लोगों की, तो वह खर्चा और कम होता है। लेकिन जो गरीब तबका है उसका कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वाटर इज हायर। यानी अगर मेरा 10 रुपए का रोज का खर्चा है, तो जो अगर गरीब परिवार है वह 2 रुपए पानी पे खर्च करता है, तो 20% उसका कंजम्पशन होता है पानी के ऊपर। और अमीर का अगर वह 100 रुपया उसकी इनकम है तो उसका 2% ही कंजम्पशन होता है। तो अगर प्राइसिंग आप कर देंगे पानी का, तो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसको मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हम कहते हैं, उसके कंजम्पशन पे इसको ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और दूसरा, यह तो एक बात है कि वीकर, अगर हम प्राइसिंग करते हैं पानी की, तो वीकर सेक्शंस के ऊपर कंजम्पशन पे ज्यादा उसकी दिक्कत होगी। और एक दूसरा पहलू इसका साथ में यह होता है कि अगर प्राइसिंग हो, क्योंकि यह नेसेसिटी गुड है, गुड्स है, मेरिट गुड है, पब्लिक गुड है, यानी पानी की आवश्यकता जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बेसिक, हवा के बाद अगर किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी मात्र को किसी तत्व की जीवन यापन के लिए तत्व की आवश्यकता है, तो वह पानी है। पानी के बिना कोई अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। तो ये जो असेंशियल गुड्स हैं इकोनॉमिकली, जिनको मेरिट गुड कहते हैं, जिनके कारण हेल्थ अच्छी रह सकती है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उन लोगों को प्राइसिंग अगर आप कर देंगे, तो आप उसके कंजम्पशन को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से शिफ्ट करके हायर सेक्शंस में तो ले ही जाएंगे। दूसरा, उसके वो कंजम्पशन को मजबूरन कम करना पड़ेगा, वो अपनी आवश्यकता से कम उसको कंज्यूम करेंगे। तो यह जो बहुत पॉलिसी लेवल में कई बार ये चर्चा आती है कि प्राइसिंग इज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कंजर्वेशन, या एम्पेरिकल एविडेंस रिसर्च में मेरिट गुड्स, एसेंशियल गुड्स, जो राइट टू लाइफ में जो लाइफ के एलिमेंट हैं, पंच तत्व हैं, उनके कंजम्पशन पे वह इम्पैक्ट नेगेटिव करता है। उतना इम्पैक्ट नहीं करता क्योंकि वह गरीब तबका ऑलरेडी
कम कंजम्पशन, जितनी उसकी आवश्यकता है उसका जो लोअर लेवल पे, मिनिमम लेवल पे ही वो कंज्यूम कर रहा है, जो एक्चुअल उसे कंज्यूम करना चाहिए। अगर नॉर्म बताता है कि 160 mgd का जो लीटर्स का पानी डेली कंज्यूम करना है, लेकिन गरीब तबके को अगर हम देखें तो वह उससे कम कंज्यूम कर रहा है। तो प्राइसिंग अगर हम कर देंगे तो वह और भी कम उसको कंजम्पशन कर देगा। तो कमर्शियलाइजेशन और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है, जो कि एम्पेरिकल एविडेंस कहती है कि प्राइसिंग इज नॉट एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कंजर्वेशन फॉर particularly weaker sections, marginalized sections and poor sections of the society. It will impact their health to a very large extent. They are already consuming lower than the basic norms prescribed by international health organization like WHO, UNESCO and the भारत की जो वाटर जो जल जीवन मिशन है, इन सब ने जो बेसिक कंजम्पशन की लेवल बताएं उससे वो कम कंज्यूम करते हैं। तो कमर्शियलाइजेशन एक चौथा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको कि रिजॉल्व करना होता है पॉलिसी लेवल में। और पांचवा जो लास्ट मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कॉन्फ्लिक्ट में, वह है प्राइवेटाइजेशन। यानी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप किसकी होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि आप लोग आने वाले समय में सोशल फील्ड में काम करेंगे, पॉलिसी लेवल पे काम करेंगे, देश के विकास के लिए पॉलिसीज को डिफाइन करने में, फॉर्मुलेट करने में अपना योगदान देंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं में अपनी भागीदारी करेंगे। तो यह चीजें समझनी हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर में हम लेंगे। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप, इकोनॉमिक पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसपे कि एक्सटेंसिवली काम हुआ और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। कई जगहों पे, कुछ देशों में ग्राउंड वाटर की ओनरशिप को वह प्राइवेट हाथों में कंपनी को दिए रखी है। रिवर्स को भी प्राइवेटाइजेशन क्या है कि इतना बेल्ट जो है वो इस कंपनी के अंतर्गत है, वह इसमें से जो भी लोग पानी लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे या मछली पकड़ेंगे या जो भी कृषि क्षेत्र के लिए यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल यूज करेंगे, उनको उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। और ग्राउंड वाटर के अंदर भी लैंड के साथ वह जो उसके नीचे का पानी है वह उसकी ओनरशिप उस इंडिविजुअल की होगी। तो ओनरशिप ऑफ जो लाइफ एलिमेंट है उसके बारे में भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन हमारा संविधान, हम क्योंकि भारत एक बहुत प्राचीन देश है, यहाँ पे सामाजिक शास्त्र में बहुत सोच विचार के चीजों को देखा गया और पंच तत्व खासकर हवा पानी जैसे पानी के मुद्दे पे एक्सटेंसिवली हमारे यहाँ पे काम किया गया है। और वह कहता, हमारा संविधान भी इस बात को एग्री करता है कि जो पानी जैसा महत्वपूर्ण रिसोर्स है जिसके बिना जीवन यापन कंप्लीटली मुश्किल है, उसकी ओनरशिप वो है ट्रस्टी, सरकार के पास भी उसकी ओनरशिप नहीं है। इट बिलोंग्स टू द पब्लिक, पीपल ऑफ द कंट्री, एंड द गवर्नमेंट इज नॉट ऑल्सो ओनरशिप ओन दैट रिसोर्सेज। तो रिवर्स को कोई ओन नहीं कर सकता, ग्राउंड वाटर को कोई ओन नहीं कर सकता, पॉन्ड्स को कोई ओन नहीं कर सकता, अब ऐसे जो लेक्स हैं उनको ओन नहीं कर सकता। तो ओनरशिप ऑफ ग्राउंड वाटर एंड वाटर, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज is vested in the government as a trustee. They are only trustee of that resources in the name of the people. तो ओनरशिप वाले में हमारा संविधान बहुत क्लियर है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, राइट टू वाटर, यानी जीवन यापन के लिए पीने योग्य पानी प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है, और साथ में उसकी ओनरशिप सरकार की नहीं है, इट इज ओनली ए ट्रस्टी। बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया है कि यह जो वाटर है इसकी ओनरशिप कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। व्हेन द गवर्नमेंट इटसेल्फ डज नॉट ओन इट, देन हाउ कैन इट ट्रांसफर इट टू एनी प्राइवेट कंपनी। तो कुछ प्रयास हो रहे हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड का प्रयास हो रहा है कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए ग्राउंड वाटर को। तो जलाधिकार फाउंडेशन इस बात के भी अगेंस्ट काम कर रहा है। Ownership and commercialization and privatization of water is not allowed in our constitution.
constitution clearly says about that. And pricing is not only the means of right conservation, बट कंजर्वेशन एक मास मूवमेंट होना चाहिए। हर आदमी को कंजर्व अगर नहीं करेगा तो पानी का, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 3% पानी अवेलेबल है जो कि पोर्टेबल है, तो उसका रिसाइकलिंग बहुत आवश्यकता है। नेचुरल रिसाइकल को भी प्रिजर्व करना और इंडिविजुअल रिसाइकल करना, पॉल्यूशन नहीं करना। नदियों को हम गंदा कर देंगे, पॉन्ड्स को, वाटर बॉडीज को हम कचरा डाल देंगे, उसमें नालियां जोड़ देंगे, उसमें उसको रिचार्ज करने के लिए ग्राउंड वाटर का ध्यान नहीं रखेंगे, अनचेक्ड एक्सट्रैक्ट करके उसको पानी को बहाते रहेंगे, ट्यूबवेल लगा देंगे। तो ये मास मूवमेंट की भी जरूरत है और इस मास मूवमेंट के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन की भी जरूरत है। तो एनजीओज को काम करना है, सरकार को काम करना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है वह मास अवेयरनेस से ज्यादा होता है। इसमें जलाधिकार फाउंडेशन और एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग मास अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ग्राउंड वाटर, रिवर एक्सेट्रा इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री। गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट इंश्योर। अगर हम गंदा करते रहेंगे, हम कचरा डालते रहेंगे, वाटर बॉडीज को अपने आसपास डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, ग्राउंड वाटर को ठीक नहीं रखेंगे, उसमें स्टॉर्म वाटर मतलब सीवेज वाटर को पेनिट्रेट करने देंगे, तो फिर ये कंजर्वेशन नहीं होगा और हमें पानी की शॉर्टेज जो प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में हम सबको दी है वह मुश्किल हो जाएगी। और इसलिए पॉलिसी मेकिंग में उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एनजीओ का, सामाजिक संस्थाओं का, इंटरवेंशन का। हमारे यहाँ पे जैसे संविधान में तो कई चीजें पानी के बारे में मैंने बताया। आर्टिकल 27 कहता है कि पीने योग्य पानी निशुल्क रूप से जनता को प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, हमारी पॉलिसी में लिखा है, लेकिन वह एडवाइजरी रूप में है क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट पे है, तो यह एडवाइजरी रूप में ये पॉलिसीज है। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लॉ। एट प्रेजेंट वॉट एवर वी आर टॉकिंग इज फ्रॉम द डिराइव्ड लॉ, कि कोर्ट केसेस से हमने डिराइव किया, वो किया है, ऐसे किया है। और जबकि उत्तराखंड और ने ये घोषणा कर दी है कि रिवर्स आर ए लिविंग बीइंग, दे हैव अ ह्यूमन राइट, बट अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो रिजॉल्व करने हैं। इसलिए एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ चाहिए जिसमें इन चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से इनकॉर्पोरेट कर दे, और हम लोग उसके लिए भी काम कर रहे हैं कि नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ आए जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है कि रिवर बैंक के सामने जो कैचमेंट एरिया होता है वह प्रॉपर है। क्योंकि अगर आप यमुनोत्री चले जाएं, यमुना हमारे दिल्ली में बगल में बहती है, अगर यमुनोत्री अगर आप कोई गए होंगे, मैं तो 2-3 बार गया हूँ, देखेंगे तो एक ट्रिकल डाउन, एक छोटा सा झरना है जिसमें से वो पानी ऊपर से गिरता है और यमुना निकलती है। नर्मदा हमारे यहाँ की बहुत बड़ी नदी है, 30 नंबर की बड़ी नदी है, वो अमरकंटक में देखे तो 1.5 बाई 1.5 का कुंड है, एक छोटा सा, उसमें से वो निकलती है। और आज बाहर आगे जाएं अमरकंटक में या बाकी जगह इतनी बड़ी नदी बन गई। तो ये कैसे बन गई? उसकी ट्रिब्यूटरीज आई हैं, कैचमेंट एरिया से पानी वहां पे रेन वाटर को कंजर्व किया, उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया और रिवर को रिचार्ज किया गया। तो अगर रिवर बेड्स को हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर देंगे, एंक्रोचमेंट कर देंगे, तो नदियों का वही हाल होगा जो यमुना का हो गया है कि गंदा नाला बन गया है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। फिर दूसरे जो अर्बन डेवलपमेंट होता है, रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बनते हैं, तो ये क्या होता है कि नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर चैनल्स को वो ब्लॉक कर देता है। तो वो कुछ जगहों पे तो पानी का भराव हो जाता है, कुछ जगह शॉर्टेज हो जाता है, वो उस जगह तालाबों में नहीं जा पाता रेन वाटर और कंजर्व नहीं हो पाता। तालाब में अगर भर जाता है पानी तो वह धीरे धीरे रिस्क के ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देता है। हमने कई तालाब यहाँ पे रिचार्ज किए, द्वारका में 2 वाटर बॉडीज को रिचार्ज किया है, कंजर्व किया है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आसपास के कैचमेंट एरियाज में जो बारिश का पानी हो उसको हम प्रॉपरली उस तालाब में
उस वक्त जब बारिश खूब तेजी से आ रही है तो वहां पे आ जाए और धीरे धीरे रिस्क के नीचे चला जाए, नहीं तो वो बह जाता है, वो मिट्टी को भी इरोड कर देता है और नालियों में चला जाता है। नालियों को फिर वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसको रिसाइकल करना, प्यूरिफाई करना, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए वॉल्यूम कॉस्टली बढ़ जाता है, और फिर हमें पानी भी शुद्ध बाकी महीनों में नहीं मिलता। तो अगर हम अपने अंदर की वाटर बॉडीज आसपास की ध्यान रखेंगे, उसको उसको कंजर्व कर देंगे, रेन वाटर के रेनफॉल के टाइम पे छोटे छोटे नालियां उसके जो खोलवा देंगे। कार सेवा में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, बहुत सस्ता काम है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे हमने द्वारका में किया है, नोएडा में 3 वाटर बॉडीज बड़ी रिवाइव की है, आगरा में एक 50 बीघा की जोधपुर झाल पे हमने काम किया है, सुर सरोवर में काम किया है। तो यह कार सेवा के द्वारा काम हो जाता है, और ग्रामीण लोगों को, वहाँ के आसपास के लोगों को उसका संरक्षक के रूप में आपने वो टीम बना दी, तो वह लोग ध्यान रखेंगे कि उसके आसपास पेड़ लग जाए प्रॉपर, बारिश के पहले उसके आसपास की ड्रेन वाटर स्टॉर्म्स खुल जाए, उसमें पानी आ जाए, कार सेवा के द्वारा हो जाता है, और फिर पानी उसमें कंजर्व हो जाता है। तो यह चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। अवेयरनेस कैंपेन के बारे में मैंने बता दिया। स्टॉर्म वाटर, अर्बन वाटर मैनेजमेंट में एक और बहुत बड़ा इश्यूज है, हमने घरों में देखा है कि हमने वैसे अगर सिस्टमेटिकली देखें तो हर शहर में एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन होती है, एक सीवेज ड्रेन होती है, घर मकान बिल्डिंग सब बनी है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन को प्रॉपरली लिंकिंग नहीं की है। तो बारिश में जब पानी होता है तो जो पानी जो बारिश का घरों में इधर से बहता है वो भी सीवेज नालियों में ही चला जाता है, और उसके कारण फिर वह जो पानी का सीवेज ट्रीटमेंट की भी कॉस्ट बढ़ जाते हैं। नहीं तो अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन को हम प्रॉपरली अर्बन वाटर मैनेजमेंट में ध्यान रख दें और उन स्टॉर्म वाटर ड्रेन को हम आसपास की वाटर बॉडीज के साथ जोड़ देंगे अगर, तो वह रेन वाटर को कंजर्व कर लेगा। इसका काम हमने सेक्टर 3 में नोएडा में किया कि जो स्टॉर्म हाई राइज बिल्डिंग के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे उनको हमने वाटर बॉडीज के साथ जोड़ दिया, तो उसमें पानी काफी आ गया। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का एक सिस्टम होना चाहिए जो कि कॉस्ट ऑफ सीवेज भी कम करेगा, और वाटर लेवल्स को 20-20, 30-30 फुट का पानी लेवल एक एक बार सीजन में उठ जाता है अगर हम लोग लोकल वाटर बॉडीज को कंजर्व करने। दिल्ली में अगर आप मास्टर प्लान देखें तो 240 वाटर बॉडीज नेचुरल वाटर बॉडीज है, लेकिन आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो 30-40 भी वाटर बॉडीज नहीं अच्छे ढंग से फंक्शन करते, वो भी उनमें भी सीवेज और गंदगी और फैल रही है, और वो उस तरह का काम हो रहा है, डीप सिल्टिंग नहीं होती। तो यह सारी बातें हमें ध्यान में आना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन छोटी सी दिखा देता हूं जो कि जलाधिकार की एक्टिविटीज जो हो रही हैं, जिस तरह से आप लोग भी उस तरह से काम कर सकते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, जागरूक सिविल सोसाइटी को जागरूक रहना चाहिए, नहीं तो पॉलिसीज बहुत गलत बन जाती है, पॉलिसीज बिकम्स काउंटर पीपल सेंट्रिक। सरकार के इंटेंशन बहुत अच्छे भी हैं, जैसे जल जीवन मिशन है जिसमें सरकार ने इस बार टारगेट लिया है कि 2019 तक मात्र 2 करोड़ लोगों के घरों में पानी टैप्ड वाटर था, और इन 3 साल में 2.5 साल में लगभग 3 करोड़ और घरों को टैप्ड वाटर मोदी जी के नेतृत्व में हम देने में सफल हुए हैं। और हमारा टारगेट है 2024 तक 19 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं टोटल भारत में पॉपुलेशन में, उन सबके घर में टैप्ड वाटर प्रोवाइड कर दें। इसके लिए 3.5 लाख करोड़ का बजट में प्रोविजन भी किया है। 5 करोड़ घरों को ऑलरेडी पानी नल से दे चुके हैं, और 19 करोड़ घरों में जाता है। एवरेज अगर 4 भी लें तो 80 करोड़ लोगों को फ्रेश वाटर पीने का साफ पानी मिलेगा घर में। यह कॉस्ट सेविंग है, इकोनॉमिक इसके बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। महिलाओं को कितने कितने घर लोगों को दूर से पानी फेच करने के लिए जाना पड़ता है, टैंकर का पानी होता लेना पड़ता है, और फिर उसमें लड़ाइयाँ होती है उन टैंकर में। बहुत सारी चीजें जो आपको डिटेल से केस स्टडी के रूप में उस किताब में भी मिलेगी, और भी आप देख सकते हैं, गूगल में भी आपको बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। तो ये प्रेजेंटेशन में आपको छोटी सी आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या हम?
हाँ जी, आपके पास परमिशन है, कर सकते हैं। आ गया स्क्रीन? हाँ जी, विजिबल हो गई है। देखिए, मैंने आपको बात की, ज्यादा मैं इसमें नहीं दूंगा, ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। जलाधिकार, हमारा जलाधिकार फाउंडेशन 2012 में बना था और यह काम कर रहा है, और यह पानी के क्षेत्र में काम कर रहा है। पॉलिसी इंटरवेंशन पे भी काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं, यानी थॉट प्रोसेस और एक्शन दोनों का यह मिश्रण है। तो इसलिए हमारा जो कुछ कंसेप्ट मास मूवमेंट में ये होता है कि कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी क्लियर, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप प्राप्त करना चाहते हो, डिफाइनेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और एक उसके लिए कंटेंट क्रिएट होना चाहिए, तभी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और एक क्लियर पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन ये सब है। तो हम लोगों ने एक्सटेंसिवली इसमें काम किया है। हमारा मानना है, जो आपको बेसिकली समझाने की कोशिश की, कि जल जीवन तत्व है उसमें, और यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। जल का कोई विकल्प नहीं है, इसके अलावा इसकी आवश्यकता की पूर्ति इसी से हो सकती है। जल जो है रिसाइक्लेबल है, नाइदर यू कैन क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज ए रिसाइक्लेबल, चक्रीय प्रवाह है, नेचुरल है, और मनुष्य के द्वारा भी उसका ये रहता है। और प्राणी मात्र के लिए पानी निशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण मांग है, कि क्योंकि प्रकृति ने इसको सभी के लिए निशुल्क प्रदत्त किया है, दिया है, प्रकृति ने इसको, इसकी आवश्यकता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इसकी ट्रस्टी है, सरकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको नियम बनाता है कि पीने योग्य पानी सबको मिलना चाहिए और निशुल्क मिलना चाहिए। तो यह हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, पीने योग्य पानी हर व्यक्ति को निशुल्क मिले, क्योंकि गरीब लोगों को इसकी ज्यादा कॉस्ट, मतलब वह अगर प्राइसिंग होगी तो वह उसके कंजम्पशन से डिराइव्ड हो जाएंगे। तो यह एक हमारा थॉट प्रोसेस है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि वह किस लिए डिराइव करता है। तो 3 हमारे डिमांड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, वह स्पष्ट रूप से यह कहता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू वाटर इज अंडर राइट टू लाइफ, और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर is the response to provide potable drinking water is a responsibility of the state government, local, central और state। तो यह हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य पानी का व्यवसायीकरण और निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और ट्रस्टीशिप की अवधारणा से ही इसकी ओनरशिप सरकार या गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि यह सारे दोनों डिमांड है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, वह यह है कि जल संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर है, उसको प्रभावी रूप से कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर लेवल पे, मात्र सरकार के ऊपर यह डिपेंड नहीं हो सकती। तो यह उद्देश्य दूसरा है। या कोर्ट केस को मैं बस पूरा नहीं जाऊंगा, कई सारे कोर्ट केसेस हैं, बहुत एक्सटेंसिवली एक चैप्टर डील करता है, करीब 15-20 कोर्ट केसेस हैं जो इस चीज को स्टैब्लिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, जिसमें कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली इस बात को क्लियरली दिया है। और अब तो पानी जैसे महत्वपूर्ण, मैंने जैसे बताया उत्तराखंड वगैरह में, तो यह बात मान ली गई है कि इवन रिवर्स आर ए लिविंग बीइंग, तो ह्यूमन, उनके ह्यूमन राइट्स की तरह राइट्स हैं कि दे हैव अ लाइफ इन इटसेल्फ।
और उसके बगैर जीवन, चाहे पेड़ पौधों का या उसमें जो मछली जीव जंतु हैं वह नहीं सस्टेन कर सकते। तो दे हैव अ ह्यूमन राइट इवन रिवर्स। और यह एक महत्वपूर्ण पहल हमारे देश में कोर्ट ने ली है और हमारी संस्कृति और उसका प्रभाव है कि हम लोगों के अंदर इतनी स्पष्ट विचार इसके बारे में है। अब मैं आपको यह, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करते हैं, वह है हमने बहुत सारी विचार गोष्ठियां की है, क्योंकि डिबेट डिस्कशन से ही वादे वादे जायते तत्वबोध, हमारे उपनिषदों में कहा है कि थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट अलोन you can reach to the truth. So you need widespread discussion on issues. बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए लोगों के विचार सबके सुनना, विचार गोष्ठियों को हम एक्सटेंसिवली ऑर्गेनाइज करते हैं। सेमिनार है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफी सेमिनार करते हैं हम लोगों ने। पद यात्रा, ये सब चीजें आप लोग भी कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, किसी भी मास मूवमेंट के लिए ये जरूरी है। अवेयरनेस करने के लिए बच्चों का स्कूल में, कॉलेज स्टूडेंट्स और जगहों को, जैसे यमुना यात्रा, पद यात्राएं बहुत सारी निकाली हैं जिसमें पानी के इश्यूज पे हम अवेयरनेस करते हैं। जल उपवास तक हमने पूरे दिन, एक दिन जल उपवास किया कि आज हम उपवास करेंगे जल सामूहिक रूप से, और दिन भर पानी के विषय पे चर्चा करेंगे, मास मूवमेंट, लोगों के विचार सुनेंगे। जल उपवास है, अवेयरनेस क्रिएट करने का नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने करे हैं उन चीजों पे। जल गीत है, चित्रकला प्रतियोगिता है, पोस्ट कार्ड, हमने करीब 70,000 पोस्ट कार्ड लोगों से कुछ इश्यूज पे क्वेश्चन करके राष्ट्रपति को भेजे हैं, जो इश्यूज पे नहीं तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन को लेके चला था, जिसको और अभी फिर से दिल्ली में चलने का प्रयास हो रहा है, जल बोर्ड को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। पहले तो वर्तमान सरकार जो दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ थी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो फिर कर रहे हैं। तो इस चीज को भी हम बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता की आवाज और जनता की आवश्यकताएं और जनता की आकांक्षाओं को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। तो एक मैसिव सर्वे करके हम लोग ऑनलाइन गूगल डॉक्यूमेंट ये सब क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। तालाबों का रिवाइवल है, लोकल समितिज बना रखी है, जल अदालत भी हमने होल्ड की है नोएडा जैसे RWS को लेके और वसंत कुंज वगैरह में, कि उनके इश्यूज को, ऑफिसर्स को बुलाया और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जल अदालत भी ये किए हैं। जल गीत है, तो ये सारे तालाबों का संरक्षण, बावड़ियों का पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, शुद्धिकरण, ये सारी गतिविधियां हम लोग लेके चल रहे हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जैसे ये जल अदालत का है, ये वाला फोटो जल अदालत है, ये जल उपवास है, ये सेमिनार डिस्कशंस है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जामिया में, ये एक्सटेंसिव डिस्कशंस है कॉलेजेस वगैरह में, गांधी फाउंडेशन में, इस तरह की एक्टिविटीज हम लोगों ने ली है। ये पार्लियामेंट में पॉलिसी मेकर्स के लिए इंटरवेंशन के लिए पार्लियामेंट एनेक्सी में हम लोगों ने यह कार्यक्रम किए। कई बार हम MPs को मिलते हैं, उनको समझाते हैं, उनको क्लैरिटी देते हैं, उनके एरियाज में बहुत लोग खुश होते हैं। पार्लियामेंट में MPs के साथ हम उनके कॉन्स्टिट्यूंसी की स्टडी करके उनको देखते हैं, तो वह लोगों को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी आसानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं या एनेक्सी में प्रोग्राम करते हैं। ये तालाब का, ये कार सेवा के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। ये द्वारका की फोटो है, कार सेवा की है। ये चर्चाएं अलग अलग क्षेत्र में, आगरा में, दूसरी जगह पे अलीगढ़ में, अलग अलग जगहों पे, पटना में, यह चर्चाएं हम लोगों ने की है, कॉलेजेस में भी किए हैं। यह दयाल सिंह कॉलेज में ये किया है, यह मास पार्क में कार्यक्रम किए। इस तरह के कार्यक्रमों को जिलाधिकारी ने किया है। ये गांधी पीस फाउंडेशन का मैंने बताया, इतने लोग, हजार, इतना, इसमें ये जो पद, ये वाली है, ये जल यात्रा, पद यात्रा मैंने कहा वो है। ये जो है, ये नुक्कड़ नाटक हमने प्ले किए यहाँ पे एक्सटेंसिवली। ये जो वाटर के एक्टिविस्ट हैं, जो पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करके 2 दिन का कन्वेंशन किया।
और बहुत व्यापक इस सब्जेक्ट में सपोर्ट युवाओं का और स्टूडेंट्स का, कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट्स को अर्ली लेवल पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में उनका भागीदारी होती है। ये कुछ हमारे जो उपलब्ध, यानी जोधपुर झाल 55 हेक्टेयर पे का ये था, मुगल कालीन ये तालाब था जो पूरी तरह से एंक्रोचमेंट होता जा रहा था। पहले यमुना से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इस यमुना का ने रास्ता बदल दिया तो इसमें पानी नहीं आता था, तो इसको रिवाइवल में डीएम के साथ मिलके इसको रिवाइवल किया। और आपको फोटो दिखाऊंगा, मतलब अब लहलहाता रहा, सूख पड़ रहा था, लोग उसको एंक्रोच कर रहे थे। वहां के लोगों को मिलके अब पूरी आगरा की बहुत बड़ी पानी की समस्या का समाधान के रूप में इसको लोग वहां देख रहे हैं। द्वारका में मैंने बताया 2 तालाब का रिवाइव किया। एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट का पूरा पानी बह जाता था बारिश में। एयरपोर्ट का 6000 हेक्टेयर की जो वो पूरा पानी है एयरपोर्ट का, वह नालियों में चला जाता था। उसको डाइवर्ट करके जो रबड़ के वो लगा दिए उसमें, वन साइडेड की, वो जब पानी आता है तो तालाब में वो नाली वो खुल जाता है रबड़ का डैम, और फिर वो उसमें चला जाता है पानी, और फिर वापस आता है तो वो रुक जाता है। इस तरह के हमने बांध बनाए, चेक बांध छोटे छोटे, और 20-20 फुट एक सीजन में पानी द्वारका वगैरह के उसके आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ गया। प्लास्टिक वाटर बॉटल के ऊपर भी हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रतिबंध, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेजेस में अब प्लास्टिक बॉटल को रोक दिया। लोगों ने कहा कि अपनी बॉटल्स लेके आए और वो उसमें पानी का इंतजाम हो, वो बात करें। पोस्ट स्टार्ट का मैंने आपको बताया ये है। ये देखिए, ये जोधपुर झाल है, कितनी बड़ी, ये ह्यूज पानी, ये यहाँ से पानी इधर से आता है, उसमें जाता है, नाले में चला जाता था। इतने पानी को, ये एक सूखा पड़ा हुआ था, एनक्रोच हो रहा था, इसको किया गया है। ये जो है दिल्ली के, ये नोएडा के ये 2 तालाब है, मैंने आपको बताया। ये सूखे पड़े हुए थे, बनाया हुआ था, लेकिन इसका पानी इसमें नहीं आता था, अब उसको रिवाइव किया गया। ये 3 पॉन्ड है नोएडा में हम लोगों ने किए। यह पूरी टीम है जलाधिकार की, लगभग 16 स्टेट्स में हमने कन्वीनर बना दिए, और 10 कंट्रीज में हमारी जो पॉलिसी लेवल पे जो लोग हमारे साथ रिकंसाइल करते हैं वह लोग हमारे साथ हैं। मैं अध्यक्ष हूँ, कैलाश जी गोदुका जी इसके महासचिव हैं, और पूरी टीम है, पूरा जलाधिकार फाउंडेशन है। बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती, कार सेवा और फिजिकल लोगों का काम ज्यादा है। ये जैसे प्रदेशों में है, ये सारा है। तो यह एक जो था, मैंने आपके सामने ये प्रेजेंटेशन छोटा सा रखा। एक मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा है, उससे आपको प्रैक्टिकली ध्यान में आ जाएगा कि कैसे काम चल रहा है। चलो, In the meantime, I request everyone to have your questions ready. Few questions have already come, and people who are from the water expertise, Mr. Rakshit Amba, Mr. BK Sanjay and all, kindly keep your questions ready. या अब तब तक क्वेश्चन आंसर करते रह सकते हैं हम। मैं देखता हूँ इसका
कैसे चलता है ना? ठीक है, कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स पे आए हुए हैं तो मैं वो पढ़ के आपके सामने ला रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आया है कि पीने योग्य पानी बिना प्यूरीफायर के किस प्रकार संभव है? प्यूरीफायर में लगातार पानी वेस्ट होता है। इस दिशा में बुद्धिजीवी व सरकार किस प्रकार के प्रयास कर रही है? जल संरक्षण के लिए प्यूरीफायर से वेस्ट होने वाले जल को बचाना क्या हमारी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए? हाँ, ये महत्वपूर्ण विषय है। कुछ जो टेक्नोलॉजिकल यूज है, मैं आपको जो टेक्नोलॉजिकल यूज है वो लोग वेस्ट करते हैं पानी का। अगर हमारा जो नलों में पानी अगर ड्रिंकेबल लेवल पे आता है, टीडीएस उसका जो टीडीएस है वो लेवल अगर ठीक रहता है तो इसकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पहले हम देखते हैं पुराने जमाने में हम नदियों से पानी पिया करते थे, लेकिन आज वह नहीं है। वो पॉल्यूशन और उसके कारण है। यह जो अर्बन वाटर सप्लाई है वह भी पोर्टेबल, उसकी क्वालिटी टीडीएस के हिसाब से खराब हो गई है। नहीं तो अगर यह सब ठीक रहता है तो हमें इसकी प्यूरीफायर और उसकी आवश्यकता नहीं है। तो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप ये देखें, मैं जापान में या इधर यूरोप में कई जगह गया, वहां से नल से पानी पीते हैं शुरू में सारा। तो धीरे धीरे एक तो ये इसका जो कमर्शलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जो एस्पेक्ट है ना, वह भी बहुत दिक्कत कर रहा है लोगों को, कि लोग उसमें सोचते हैं कि वह जो पानी है, मतलब उसको हमें वो प्यूरिफाइड वाटर ही पीना चाहिए। उसके सारे इश्यूज हैं, वो कमर्शलाइजेशन और उसके भी कई सारे इश्यूज हैं जिनको हमारे सामने ध्यान में लाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार पीने योग्य पानी ठीक से देती है और वह हम लोगों को सबको मिलता है तो यह सारी चीजों की इतनी जरूरत नहीं है। इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन आया है कि क्या आरओ का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? क्योंकि उसमें से बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हटाने का तो दावा किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बात आती है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं पानी में से वो भी चले जाते हैं आरओ वाटर पीने से, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में लोगों की हेल्थ पे और नरिशमेंट पे बहुत असर पड़ता है। तो इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, वो तो है ही कि जो आरओ वाटर में मिनरल्स वगैरह का जो प्रॉब्लम है, इसीलिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का खर्चा हो रहा है या जो इंडिविजुअल का खर्चा हो रहा है, पानी का वेस्टेज हो रहा है, उसका अर्बन वाटर मैनेजमेंट और सप्लाई से बिल्कुल सीधा रिलेशन है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो प्रॉपर ड्रिंकेबल पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन सप्लाई होगा तो ये सारी चीजें अपने आप में खत्म हो जाएगी, खर्चा भी बढ़ेगा। कई बार हम शॉर्ट टर्म पैसा सोचते हैं कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में उसमें जो बहुत खर्चा लगता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जो सप्लाई सिस्टम, जो टैप्ड वाटर है, इन सब का जो सिस्टम है वो ठीक अगर सप्लाई हो जाता है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या चीज़ है ऐसा जो रोक रही है कि हम, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर या तो गवर्नमेंट बना सकती है या फिर अगर उसको प्राइवेटाइजेशन कर दे तो बन सकता है। तो आम जनता तो इसमें एक तरह से हेल्पलेस फील करती है कि उसके पास जो है एक मूलभूत जो आवश्यकता है पानी की, वो या तो पहुंच ही नहीं रही है या पहुंच रही है तो उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो कि होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये बात देखिए, इसका प्रॉब्लम पता है क्या है, पॉलिसी लेवल पे थिंकिंग में कहीं ना कहीं इस चीज में प्रॉब्लम आती है कि पीने योग्य जो, इसीलिए पॉलिसी इंटरवेंशन, नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ की भी आवश्यकता है कि पीने योग्य पानी, अगर जो अर्बन वाटर मैनेजमेंट है, आप इजराइल का मैं एग्जांपल लेता हूं, उन्होंने मैसिव खर्चा किया पानी के सप्लाई के लिए, और आज इजराइल जो कि वाटर स्टार्व्ड कंट्री था, वह वाटर सरप्लस कंट्री है। तो वह अर्बन वाटर मैनेजमेंट के सही टेक्नोलॉजी को यूज करके वह हो गए। तो और सही पॉलिसी इंटरवेंशन, सही वाटर कंजर्वेशन, जैसे टैप्स आते हैं, कंजर्वेशन के टैप्स आते हैं,
जो रिसाइकलिंग के जो इक्विपमेंट्स आते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों को घर में यूज करना। सबसे बड़ी बात है कि जो अर्बन वाटर मैनेजमेंट में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को और लोकल वाटर बॉडीज को अगर हम रिवाइव कर देंगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंटली होगी। और सरकार अपना काम, ये जो टैप्ड वाटर का जो 19 करोड़ लोगों के घरों में टैप वाटर देगी, उसमें पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर देगी, तो अपने आप में वह यह सभी समस्याओं का समाधान रहेगा। और इसका पॉलिसी इंटरवेंशन जरूरी है। एक मिनट मैं देखता हूं ये क्यों नहीं मैं वो आता उस पर एकदम। कुछ और भी प्रश्न आए हुए हैं, जैसे पहले डग डग रोटी पग पग नीर हुआ करता था, अभी क्यों नहीं? क्या यही तरक्की है? क्योंकि अगर हम देखें तो पहले भारत में एक प्याऊ का कॉन्सेप्ट होता था और थोड़ी थोड़ी दूरी पे घड़े में मटके में पानी पीने का मिलता रहता था, और उसमें किसी आरओ की या किसी वाटर फिल्टर की जरूरत नहीं होती थी, और वो पानी एक चल गया, ये टेस्टी भी होता था। एक मिनट हम ये देख लेते हैं। हाँ, साथियों, जलाधिकार फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोग वीडियो नहीं आ रहा है आपका, ऑडियो आ रहा है। नोएडा में तालाबों को गोपाल जी वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्या चीज? वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रहा, स्क्रीन शेयर। जी आप सर दोबारा स्क्रीन कीजिए। हाँ सर दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा जी। और अरविंद जी आप अपना म्यूट रखिए, आपकी तरफ से बहुत वो ऑडियो डिस्टरबेंस है। मेरे से डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ जी, तो मैं बार बार आपको को-होस्ट मुझे हटाना पड़ रहा है, आप म्यूट पे रखिए। स्क्रीन शेयर फिर क्यों नहीं हो रहा? तुम कर सकते हो निशांत? सर आप बंद कर देंगे तो मैं कर दूंगा सर। तो ये पहले ना आप स्क्रीन शेयर आप अपना बंद कर दीजिए ऊपर वहां से। कहाँ से? अच्छा स्क्रीन शेयर बंद न्यू शेयर। हाँ नहीं, हाँ स्क्रीन शेयरिंग बंद कर फिर से ये अब कर दूं शेयर? हाँ हाँ जी इसको तो, बंद करके हाँ आप दोबारा कीजिए। अब खोलूं? हाँ जी स्क्रीन शेयरिंग और ऑडियो उसमें टिक मार्क लगा देना कि ऑडियो भी आ जाए। ये स्क्रीन शेयर तो दिख रहा है ना? अब दिख रहा है स्क्रीन? अभी नहीं आया। अभी नहीं आया सर, जब आप शेयरिंग करेंगे जब आएगा ना। मैं तो दबा रहा हूँ स्क्रीन शेयर। निशान जी आप कर दीजिए फिर, अगर नहीं हो रहा है तो उधर। ठीक है मैं कर देता हूँ इसको। ये लिखा हुआ है ऑल पैनलिस्ट। अच्छा ठीक है, अब हो गया। अब आ रहा है? जी बिल्कुल सर, अब आ रहा है। पर ऑडियो नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि आपको शेयर करते हैं तो ऑडियो का चेक बॉक्स भी क्लिक करना पड़ेगा। एक बार स्टॉप शेयर करके दोबारा से शेयर कीजिएगा, और जब शेयर स्क्रीन आए तो उस पर एक ऑडियो चेक बॉक्स होता है। आ गई आवाज आ गई। के अंतर्गत हम लोगों ने नोएडा मैक्सिमाइज कर दीजिए आप सर, इसको पूरा कर दीजिए बड़ा किया। और नोएडा में सेक्टर 135 में और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 3 में चेरी काउंटी के सामने 2 तालाबों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। यह तालाब बने हुए थे लेकिन कई वर्षों से इसमें पानी नहीं भर पा रहा था, तो हम लोगों ने 1 महीने के पिछले प्रयास में जो आसपास का कैचमेंट एरिया है उनसे मिट्टी में जेसीबी और उससे लेबर लगा के उन नालियों के साथ तालाब के अंदर उसको जोड़ा। और अभी जो पिछले 2 दिन की जो बारिश हुई यहाँ पे, उसमें हमने देखा कि हमारा जो प्रयास 1 महीने का था बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ। जो मंदिर है वहाँ पे पानी का जल भराव होता था, वहाँ पे कुछ दुकानें हैं उसके सामने जल भराव होता था, कैचमेंट एरिया में आसपास गड्ढों में पानी भर जाता था, उनको हम सफलता से तालाब तक जोड़ने हुए। और 1 ही दिन 2 दिन की बारिश से
बहुत तेजी से सारे आसपास का पानी उन तालाब में आया और यह लगभग 3-4 फुट पानी उसमें भर गया है 2 बारिश से ही। अब और बारिश होगी तो वह लबालब पानी से और पूरी तरह भर जाएगा। भैंस भी, बच्चे भी उसका आनंद ले रहे हैं। और कई लोगों ने शुरू में हमें कहा कि हम लोग ग्राउंड वाटर में से पंप लगा के तालाब को भर दें। हम यह नहीं चाहते थे। हम चाहते थे वाटर जो है उसको हार्वेस्टिंग की जाए और आसपास के कैचमेंट एरिया से जो पानी बह जाता है और समस्या करता है उसको इस तालाब में लाया जाए, जोड़ा जाए। और फिर जब ये भरेगा तो धीरे धीरे यह आसपास के एरिया का ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा। और जो लगभग 2 से 3 लाख मकान आसपास चेरी काउंटी में है, उन लोगों की समस्या भी खत्म हो रही है और उस पूरे क्षेत्र में ग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर उसका वाटर लेवल बढ़ेगा। इस तरह का जलाधिकार फाउंडेशन ने प्रयास द्वारका में भी किया, आगरा के पास दीनदयाल धाम में भी किया, सूर सरोवर में भी किया और हमें बड़ी सफलता मिली। और हमें खुशी है ये बताते हुए कि नोएडा के सेक्टर 3 के 2 तालाब केवल 1 महीने के प्रयास से लगभग 70-75 हजार रुपया ही खर्च हुआ और हम नेचुरल तरीके से बारिश का पानी वहां पे इकट्ठा करने में सफल हुए हैं। और यह प्रयास सभी लोगों के कार्य सेवा और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हुआ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सहयोग ये था कि उन्होंने हमें एडॉप्ट करने के लिए यह तालाब दिए। इस तरह के प्रयास को, जल संरक्षण को मैं चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में आप लोग उसको बढ़ावा दें, करें, तालाबों का संरक्षण करें। इससे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आह्वान है और प्रयास है कि पीने योग्य पानी हर घर में हर व्यक्ति को नल के द्वारा दिया जाए और जल संरक्षण किया जाए, उसको बहुत बल मिलेगा। जलाधिकार फाउंडेशन के अध्यक्ष के नाते मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि इस प्रयास को आगे ले जाएं, बढ़ाएं और इस तालाब में आके इसका आनंद लें। बहुत छोटा प्रयास है, मेहनत तो लगती है, लेकिन 1 महीने के प्रयास से यह कार्य में हम सफल हुए हैं। अब आने वाले सोमवार को हम वहां पे वृक्षारोपण भी करेंगे। आम का पेड़, नीम का पेड़, अमरूद का पेड़, आंवले का पेड़ आसपास लगा के इस प्रयास को आगे ले जाएंगे। आप सबका सहयोग, समर्थन हमें मिले, इसी ऐसी आशा है। जलाधिकार फाउंडेशन के इस प्रयास और आप लोगों के समर्थन के लिए सभी कार्यकर्ता और सभी बंधुओं बहुत अच्छा और सफल प्रयास ये है और बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्रयास पूरे देश में होना चाहिए। अगर RWA, MWAs के साथ आप, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबका डेटा भी है और सबके साथ इन्फ्लुएंस और कम्युनिकेशन भी है, तो अगर हर एक RWA और MWA इस बात की जिम्मेदारी ले ले तो मुझे लगता है कि ये चारों ओर फैलेगी बात। और हमारे साथ ब्रिजेश माथुर जी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स दिल्ली की एक संस्था है, उसके फाउंडर हैं। तो वो 70 में से लगभग 63 असेंबली सीट्स जो हैं दिल्ली की, उनमें उनके सिटीजन फोरम्स हैं। तो ब्रिजेश जी, मैं आपको एक बार आप इसमें पैनलिस्ट में ले रहा हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ अगर प्रकाश डालें। और कोई प्रश्न है क्या? और कोई प्रश्न है? हाँ, इन द मीन टाइम मैं प्रश्न भी इसमें ले लेता हूँ। एक प्रश्न एक साथ आप सब बोल दीजिए, मैं उनको, आप जो 2-4 प्रश्न जो भी है ना एक साथ बोल दीजिए, तो 2-3 मिनट में मैं सबको एक साथ ही ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया है, इंडिया मार्का हैंडपंप पीने योग्य पानी में कितनी मदद कर रहा है, वह इसकी गहराई का मानक क्या होना चाहिए और सरकार की ओर से इन हैंडपंप की गहराई कितनी तय की गई है? ये टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि मेरे मतलब वो तो सरकार का जो वाटर बॉडीज वो देखते हैं, वो एक्चुअली मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है। एक आया है, सरकार पीने योग्य पानी देने तक हर घर में प्यूरिफायर से निकलने वाले पानी को किस तरह बचाया जाए? पीने योग्य पानी की योजना बनाने और घर घर पहुंचाने का कितना समय लगेगा? देखिए, जो हम तो ये चाह रहे हैं कि पीने योग्य पानी, प्यूरिफायर्स का घरों में पानी के लिए आवश्यकता ना हो। सरकार की जिम्मेदारी, लोकल बॉडी, सेंट्रल स्टेट की है कि पीने योग्य पानी वह पोर्टेबल वाटर जो टैप में सप्लाई करे, विच इज ऑफ ड्रिंकेबल क्वालिटी, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि लोगों के अंदर भी एक कई जगह यह गलतफहमी है कि अगर इतने टीडीएस से नीचे अगर पानी है तब भी वो पानी को पीना में डरते हैं। तो वह एक अवेयरनेस और उसका जो एजुकेट करने की जरूरत है कि अगर आपके नल में पीने योग्य पानी सफिशिएंटली आ रहा है तो आपको नल का पानी पीना चाहिए। वो आप बिस्लरी और इस तरह का, मैं कंपनी का नाम तो थोड़ा लेना ठीक नहीं है, फिर भी जो प्लास्टिक बॉटल है ये तो, और ग्लोबली प्लास्टिक बॉटल का चलन खत्म होता जा रहा, बैन हो रहा है। यूएसए में 169 कंट्रीज है जिनमें प्लास्टिक बॉटल जो होती हैं, जिनको हम आज भारत में खूब तेजी से इस्तेमाल उसका बढ़ाते जा रहे हैं, उनको बैन कर दिया गया है। तो अपनी वाटर बॉटल लें, कहीं भी साथ में रखें, ग्लास की, स्टील की, तांबे की, घर से भर के उसको लेके चलें जहां भी हो। जगह जगह पब्लिक में, चाइना में भी गया, वहां हर जगह पानी डिस्पेंसर है, सबके पास अपनी बॉटल होती है, वो उसमें भरते हैं और पीते हैं। व्हाई डू वी नीड प्लास्टिक बॉटल्स? और तो इसलिए ये जो उसका वेस्टेज है वो सारे इश्यूज उसके कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भारत अगर आप देखें, जैसे आपने हाँ, प्लास्टिक एक बॉटल इनने की, और बोला था, हमारा लक्ष्य है हाँ 2024 तक भारत के हर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचा दिया जाए, और इसके लिए 3,60,000 करोड़ तो इस साल के बजट में प्रावधान है। 5,000 घरों में ऑलरेडी हम पहुंचा चुके हैं। 19 करोड़ टोटल घरों तक ये नल का पानी पहुंचाना है। यह बात ध्यान में आती है। और मेरे को एक चीज और यहाँ पे कहनी है, बस छोटी सी, वह है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। युवा लोग आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, न्यू लीडरशिप डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक्चुअलाइजेशन ऑफ ऑल लीडर्स जो आपका प्रकल्प है, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमारी सरकार का बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान है। और आने वाले समय में कई इनिशिएटिव हम लेके आ रहे हैं जिसमें जो ऐसे युवा लोग जो समाज में बदलाव करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, इनोवेशन को यूज करना चाहते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और उनकी आजीविका का एक प्रक्रिया बने। इसीलिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का पूरा प्रावधान लेके आए कि उनको लिए क्लाउड फंडिंग या इस तरह का अरेंजमेंट हो और समाज में अच्छे कामों के साथ आजीविका भी चलती रहे। इनका, जिसको हम जिसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह रहा हूँ, गुड ऑब्जेक्टिव वर्क बट टेकिंग केयर ऑफ योर फाइनेंशियल नीड्स ऑल्सो इज द नीड ऑफ द आवर। केवल उसका प्रॉफिट मोटिव अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है या बिल्कुल सोशल है, वो अलग है, लेकिन एक नया वर्ग डेवलप हो रहा है जिसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में हम कहते हैं, उसको डेवलप करने का हमारा बहुत प्रयास है। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो लोग मिशन ओरिएंटेड जीवन जीना चाहते हैं उनके पास एक चैलेंज तो परिवार से आता ही है कि वो परिवार से एक रेजिस्टेंस होता है, और उसका भी मूल कारण ये होता है कि उनको लगता है कि फाइनेंशियली ये हमें सस्टेन नहीं रख पाएंगे और इसीलिए इनको मिशन ओरिएंटेड वर्क ना करने दो। तो अगर गवर्नमेंट का ये प्रयास इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत अच्छी क्वालिटी लेके आता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है मिशन ओरिएंटेड वर्क करने में जो भी रुके हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे और भारत को एक नई पूरी खेप जो है लीडरशिप की मिल जाएगी। तो इस स्पेसिफिक बात पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों का ऑर्गेनाइज करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। मेरा ट्विटर हैंडल है, लोग जुड़ सकते हैं, गोपाल के अग्रवाल। ठीक है। एक लास्ट चीज मुझे गोपाल जी बोलनी है। हाँ। जो हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का जो ग्रुप बना हुआ है पूरा दिल्ली में, वो अभी हाँ। आपकी वीडियो में कोलैबोरेशन का आह्वान था उसमें। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के जो फाउंडर हैं ब्रिजेश जी, हाँ। उनके द्वारा जो है एक कोलैबोरेशन सिस्टम अगर दिल्ली में क्रिएट कर पाए तो मुझे लगता है कि जो आपका भी मिशन है वो भी फैलेगा और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी उसमें पूरे होंगे। तो ब्रिजेश जी, क्विकली 1 मिनट के अंदर अगर आप जो भी आप गवर्नमेंट से आपकी नीड है या जो कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आप गोपाल जी के सामने पेश करें। जी, मेरे जो साथ हैं श्री भरत तिवारी, शायद आप उनको जानते हैं। हाँ, भरत तिवारी जी, वो दिल्ली के RWA की जो फेडरेशन है, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, उसके करीब सारे RWA दिल्ली के उनके साथ शामिल हैं उसमें। हाँ। और वो बहुत से कुछ ऐसे काम करते हैं
और वो पानी के बारे में तो तिवारी जी उत्तराखंड में बहुत काम कर चुके हैं विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम एनीवन। और हमारा ये सोचना है कि जब हर एक स्टेक होल्डर यानी कि हर एक सिटीजन या कि हर एक नागरिक जिम्मेवार बन जाए तो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनका इम्पैक्ट होगा। अभी अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाती है, सिटीजन उसका रेजिस्टेंस करते हैं हालांकि सिटीजन के फायदे के लिए बनाती है। तो अगर सिटीजन्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, सिटीजन्स की उसमें कोऑपरेशन ली जाए, सिटीजन्स की उसमें पार्टिसिपेशन की जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और जहां ऐसा हुआ है वहां बहुत असर हुआ भी है। हाँ, पर तो पानी के सिलसिले में इस इनिशिएटिव का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ये दिल्ली में बात पक्की है। आप देखिए दिल्ली में इतनी बड़ी नदी बहती है, इतनी अच्छी बारिश होती है, इतने सारे ग्रीन एरियाज हैं, हाँ, फिर भी वाटर टेबल नीचे चली जा रही है और बारिश का पानी नदी में गंदा होके नाले में बहता चला जा रहा है और पानी की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। हाँ, तो ये राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द स्वीपर ऑफ द पेवमेंट, every citizen of Delhi is suffering, but no citizen of Delhi is participating. तो इसमें मैं ये चाहूंगा कि अरविंद तिवारी जी, ब्रिजेश माथुर जी और गोपाल जी, आप लोग एक अगर 10-15 मिनट का एक कम्युनिकेशन ऑफलाइन अलग से कर लें और देखें कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो ग्रुप है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के साथ, तो वो और जो गोपाल जी का इनिशिएटिव है वो आपस में मिलके कैसे इस समस्या को सॉल्व करें, क्योंकि समाधान हमारे सामने ही है। जैसे आपने कहा कि कितनी सारी बारिश होती है, हम खुद अपने बारिश के पानी को वेस्ट जाता हुआ अपनी आंखों से देखते हैं और लगता है कि पानी की किल्लत क्यों है जब ईश्वर की तरफ से इतना बारिश आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का, सिस्टम का ही फेलियर है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, सारे वाटर मिनिस्ट्रीज यहाँ पर हैं, सारे वाटर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, सारे वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ब्रिजेश माथुर जी, मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि गोपाल जी का वक्त एक्सीड कर रहा है, वो कहीं दूसरे तो इसीलिए मैंने कहा ऑफलाइन जो है। मैं खाली एक ही चीज कहना चाहता हूँ गोपाल जी से चलते चलते कि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी कि पानी जो आपके नलों में आता है जिसका TDS प्रिस्क्राइब जो लिमिट दी गई उससे थोड़ा कम है तो भी लोग पीने से हिचकते हैं। मैं उसके कारण पे कहना चाहता हूँ उसमें सीधे सीधे गवर्नमेंट इमीडिएट स्टॉप कर सकती है। क्या वो कर सकती है? जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं सारे के सारे प्यूरिफायर्स के, क्या उनपे इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकती कि इस तरीके के बैन न दे कि खाली यही पानी पिया जाए, ये पानी भी पी सकते हैं, जब ऐसा पानी ना हो तो इसका उपयोग करें। इतना भी कर देंगे तो एक बहुत बड़ा सुधार होगा। ये तो सीधे सीधे काम हो सकता है। इससे ज्यादा अभी बाद में चर्चा करके कहूंगा कि एक ऐसा काम है जो सीधे सीधे सरकार के नियंत्रण में है। कहीं ऐसा तो नहीं रेवेन्यू जनरेशन के चक्कर में सरकार इसको कॉम्प्रोमाइज कर रही है, एडवर्टाइजिंग कंपनियां इसको मिसयूज कर रही है पब्लिक के ऊपर? ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसपे हम एड्रेस कर सकते हैं, फिर इस पे विस्तार में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय, आप हमारे संग उपस्थित रहे और आपकी उपस्थिति हमेशा एक लोगों को देखिए कितना विश्वास देती है कि आपसे लोग खुल करके बात कर पाते हैं। बिल्कुल गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप आते रहिए। और अरविंद जी तो जुड़े ही हुए हैं आपके साथ। पॉलिसी मैटर पे तो खुल के ही चर्चा होनी चाहिए, है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के साथ मिलके अगर कुछ संभावना बनती है तो जरूर उसको हम आगे लेके चलें। बिल्कुल, कोई भी ऑफलाइन भी हम अब कर सकते हैं, फिजिकल भी मीटिंग कर लेंगे जब भी। बहुत अच्छी, पानी के लिए मैं आपसे चर्चा करता हूं मिलकर के, क्या कि बहुत से सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। कुछ लोग जो हैं, आप जी आप है ना हितेश जी, आप फिजिकल भी कुछ लोगों की मीटिंग करवा सकते हैं। तो इस मूवमेंट को हम, क्योंकि सरकार ने अवेयरनेस वगैरह के लिए भी एनजीओ का इन्वॉल्वमेंट बहुत किया है। यूपी में ही अभी मैं देख रहा था, एक टेंडर निकाला था कि एनजीओस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो जिले स्तर पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो अवेयरनेस मास मूवमेंट ये एनजीओस के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे काम किया जा सकता है। बिल्कुल, तो एक फेस टू फेस मीटिंग कर लेंगे। अरविंद जी, आप इसको इनिशिएटिव को आगे लेके चलिए
कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिल्कुल। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन, CRDG एंड गोपाल जी का जलाधिकार जो मिशन है, हम लोग साथ मिलके क्या कर सकते हैं, उस पे संभावना पे विचार करें। बिल्कुल बिल्कुल, एक ज्वाइंट रूपरेखा और बना क्योंकि लेते हैं, मैं काम भारतीय करते हैं। जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूं और आर्थिक विषय देखते हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन पार्टी का यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जन कल्याण, जन भागीदारी पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए पार्टी के प्लेटफॉर्म से सुनिश्चित हो, चाहे वो सोशल पॉलिसी हो, चाहे वेरियस पॉलिसीज हैं, उन सब में पार्टी की तरफ से काफी इंटरवेंशन सजेशन के रूप में होता है। हम ये नहीं कहते कि सरकार हमारी हर बात मान ही लेगी, लेकिन जनता की बात सरकार तक जाए, यही हमारी सफलता के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। और हमारे बीजेपी एज ए स्पोक्स पर्सन और आर्थिक विषय को मैं देखता हूं तो इन सारी चीजों में पॉलिसी इंटरवेंशन राइट पर्सन तक पहुंच जाती है बात। मेरा एक गुजारिश है कि तिवारी जी मेरे ख्याल में है, अगर वो आ जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे उनसे और उनसे आप बात भी कर सकते हैं इस नहीं, वो चर्चा। जानते हैं, इनके संग नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं हाँ, गोपाल जी के संग, बीबी तिवारी जी। तो वो अभी भारत अभी भूषण तिवारी जी वेबिनार में है, आपके आप संग चाहें नमामि तो गंगे पैनलिस्ट प्रोजेक्ट बना में सकते जुड़े हैं। हुए हैं। अगर आप चाहें तो उनको पैनलिस्ट बना के वो 2 मिनट एक की बात गोपाल जी से डायरेक्टली कर लेंगे तो आप चाहे मामला आगे बढ़ सकता है। बीबी तिवारी जी, मैं आपको पैनलिस्ट भेज रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। तिवारी जी, तो एक काम करते हैं, अरविंद जी, ब्रिजेश माथुर जी, मैं और गोपाल जी और बीबी तिवारी जी, यदि हम लोग बैठ के एक बार इन सारे बिंदुओं पे विचार कर लें तो मुझे लगता है कि एक अगली स्टेज पे बात पहुंच सकती है और प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सकता है। वो ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक उसके अफेयर्स के भी नेशनल स्पोक्स पर्सन है गोपाल जी, तो जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है, उनको जो फंडिंग से रिलेटेड जो इश्यू आते हैं या वो मनी एक रोड ब्लॉक बन जाती है काम करने में, एक उस बिंदु पे और एक इस वाले बिंदु पे, और एक बीजेपी में अगर लीडरशिप की एक पाइपलाइन, सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स की पाइपलाइन अगर बनानी हो, जैसे तो देश का ही टैलेंट है वो लीडरशिप टैलेंट, तो हम लोग ये चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से कुछ हम भी ऑफर करें और कुछ चुनिंदा 40-50 लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ट्रेनिंग का एक बैच क्रिएट किया जाए और उन लोगों को उस ट्रेजेक्टरी पे लाया जाए जहां से वो एक मसीहा लेवल की और अवतार लेवल की परफॉर्मेंस दे पाए। तो इन तीनों बिंदुओं पे बात करने के लिए अरविंद जी, मैं चाहता हूँ कि गोपाल जी से एक फेस टू फेस मीटिंग तो बनती है और इसको की आवाज सुन लीजिए उनका, उन्होंने बीबी तिवारी जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, बीबी तिवारी जी, एक बार आप भी 1 मिनट के लिए बात कर लीजिए। जी धन्यवाद। गोपाल जी नमस्कार, ओम नमः शिवाय, कैसे हो? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तिवारी जी, पर आपकी वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। ओके। यस बीबी तिवारी जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, आपको परमिशन है। इन द मीन टाइम आप बोलते भी रहिए। ये इतनी सारी इसमें चक्कर है ना। कोई बात नहीं, आप अपनी बात बोल लीजिए तिवारी जी फिर। 1 मिनट, जैसे क्या आपने अब आ गई? हाँ जी, हाँ जी, आ गई। वीडियो ऑडियो दोनों ठीक है आपकी, आप बोलिए। गोपाल जी नमस्कार, ओम नमः शिवाय। हमने तो भेंट रखी थी, वो बीच में हो गया। पर मेरा सजेशन ये है कि अगर लोकल पीपल्स को नहीं इन्वॉल्व करोगे तो ये इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। मतलब जल अधिकार में हमने जो किया और जो मैंने 14-15 साल पहले वहाँ उत्तराखंड में किया, जहाँ एक्सेसिबिलिटी भी मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। अब वो क्लाइमेट चेंज के चक्कर में हमारी जो घाटी है जहाँ शुरू किया था, वहाँ कोई परेशानी नहीं है पानी की, अनलाइक 13 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो 3 चीजें मेरे जहन में आती है जो बहुत जरूरी है कि नंबर 1, लोकल्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे दिल्ली में अपना URT के थ्रू काम किया, उत्तराखंड में करना है तो मेरा ऑलरेडी प्रूवन प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये है कि हम वो एकेडमी के ही रास्ते में हैं, तो जितने प्रोफेशनल्स आते हैं दे कैन विजिट दी एक्चुअल सिचुएशन जो कर रखा है। ठीक है, उसके बाद अभी तो वो घुटने में फ्रैक्चर है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ वहाँ पे उत्तराखंड, और जो बचे कुछ एरिया रह गई हैं ऊपर, मतलब
टेरी और उसके ऊपर और चमोली वगैरह। तो 2022 के इलेक्शन शुरू होने से पहले जहां हाहाकार हो जाता है पानी का, गर्मियों में पानी नहीं होता है, मसूरी नैनीताल में टैंकर चलते हैं, तो उसका तोड़ निकालने के लिए वो बेसिकली क्या है कि फेरो सीमेंट की उत्तरकाशी में हमने ऑलरेडी कर रखी है, टंकियां बना दी, चेक डैम बना दिए छोटे छोटे, ठीक है। तो बट स्टेट गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, और वो सारा लोकल उन्हीं के जरिए हो सकता है। तो आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट, और मेरे से जो हो सकता है आई एम विलिंग। आप उस साइड में धामी जी से बात कर लीजिए, और किसी दिन टाइम निकाल के, जैसे मैंने मिलना था आपको, मैंने न्यूता भी दिया था कि वक्त निकाल के आओ गोपाल जी, बैठ के बात करते हैं, यही लंच करना। बट आप इतने व्यस्त हो, और मेरी टांग टूटी हुई है, आई कांट ड्राइव, मैं तो मजबूरी से जाता हूँ अस्पताल भी। तो उसका तोड़ यही है, और क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने कर चुका हूँ, तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। प्लीज में काम करना बड़ा इजी है, वहां तो एक पाइप ले जाने में ही हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि जितने काम करने वाले हैं, जैसे पोखरियाल जी कह रहे थे, सारे तो पहुंच गए नीचे, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ। इसी वजह से चाइनीज इंकर्शन हो रही है ऊपर चमोली में, पिथौरागढ़ में। अरे सर, हमारे दिल्ली वालों की समस्या सुलझाओ। आप दिल्ली में हो, जब तक उत्तराखंड जाते हो तब तक दिल्ली में काम शुरू कर दो। और दिल्ली ठीक है, में तो मुझे लगता है आपके ब्रिजेश पास जी, वाटर बेबी तिवारी वाटर जी, वाटर इंस्टीट्यूट है, CII का, एक आपके पास सारी इंडस्ट्री फेडरेशन है, आपके पास आदरणीय ब्रजेश सारी माथुर साहब, बेबी टेक्नोलॉजी। तिवारी जी, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग अगर आज के कार्यक्रम को जो एजेंडा है उसको हम परस्यू करें, तो आज हाँ के लिए जी, अच्छा तो होगा। इसमें जैसा अरविंद जी, कि आप पहले, आपके ये ऊपर है बाकी ये, चीजें आप हम एक, बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल गोपाल जी के बिल्कुल साथ एक मीटिंग तो आवश्यक है इन 3 बिंदुओं पे। तो अरविंद जी, आप एक टाइम लेके एक मीटिंग शेड्यूल कर लीजिए, बिल्कुल और इसको बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल पे लेके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट अब विल बी मच मैं बेटर। बहुत धन्यवाद देना चाहता बहुत हूँ, बहुत धन्यवाद। है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच गोपाल ओके, जी, थैंक नमस्कार यू। सभी आपके को। आने के नमस्कार, लिए बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मिलना जरूरी है गोपाल जी, जल्दी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अरविंद जी के पास। अरविंद जी, हमारे नेक्स्ट स्पीकर्स तैयार हैं, तो आप उनको स्टेज पे इनवाइट कीजिए। जी, हमारे नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर BK संजय जी हमारे सामने स्क्रीन पे भी आप सबको दिख रहे थे। ये डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक ट्रेनर्स एंड मेंटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में बीके संजय जी के साथ उनके एक सहयोगी भी हैं, मिस्टर नवीन। तो ओके, हाँ जी, Mr. BK Sanjay is a dynamic trainer, educator, and management consultant with a focus on co-creating value-based enterprises. He is a socio-spiritual reformer campaigning for personal betterment through individual paradigm shift. He has done 2-year full-time PG DBM from Ford School of Management, New Delhi in session 1995-97. He has also done BA honors from Magad University, Bodh Gaya in year 1993. He has served as Joint Secretary of Bihar State Productivity Council, Patna, State Chief Coordinator of National Human Resource Development Network, Patna Chapter, President City Managers Association, Bihar since 2010, and imparted stress management and meditation training in corporate sector, PSUs and government department. Several prominent organizations have got benefited through the trainings provided by Mr. BK Sanjay, like NTPC, BSNL, Indian Oil Corporation, Indian Railways, Rotary Clubs, Indian Medical Associations, Bihar Police, Kendriya Vidyalaya, Sangathan, IFCO, and District Administration, Gaya, Muzaffarpur, and Begusarai. He has received certificate of appreciation from Principal Secretary UDSD and Commissioner Patna Municipal Corporation for excellent work done during 350th Prakash Utsav at Patna Municipal Corporation. He has been instrumental in increasing the revenue collected from house tax by 11 times and recovered revenue from additional stamp duty from nil to 1.75 crore
in financial year 2016-17. He has successfully imparted training on segregation of waste at Rajgir Nagar Panchayat. He has qualified for admission in IIM Ahmedabad Fellow Program in Management through CAT in 2003. He has appeared on a few television talk shows which were aired on Peace of Mind, Astha, and Sanskar channels. He has trained students at institutes like IIT Patna, NIT Patna, IRIM Jamalpur. He has also conducted many seminars and programs as social service at various schools, colleges, Rotary clubs, hospitals all over India. And his colleague, Mr. Naveen Kumar, having experience in development field around more than 15 years. He masters from UPES Dehradun, including the education from IIM Kolkata and IIT Delhi. He has expertise of water, urban waste, clean energy, and health sanitation. His project on Dharnai, Bihar, a first community-driven microgrid project awarded internationally and nationally. The Dharnai project, also adopted by Bihar government, Panchayati Raj and Rural Development Department. It is a learning training center for newly probationary IAS and other senior officials. He is ex-deputy team leader, lead of state for Bihar, UP, West Bengal. So we welcome both the people, Mr. Sanjay, PK Sanjay and Mr. Naveen Kumar. मिस्टर नवीन, आपको भी को होस्ट राइट दिए हैं, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। संजय जी, आप पहले बोलना चाहेंगे, पहले नवीन जी बोलेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय जी। संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप डायरेक्टली मोबाइल से बोल लीजिए, इसमें आपका जो है ईयर प्लग है उससे आवाज नहीं आ रही है। अभी भी ऑडिबल नहीं है संजय जी। नवीन जी आप प्रारंभ करिए, बीके संजय जी की आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी बिल्कुल, मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? जी, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, पहले तो सभी को नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि आज की इस महत्वपूर्ण समिट, ग्लोबल समिट में आप हमको एक मौका दिए कि बीच में आके आपके बीच में अपनी बात रखें। चलिए, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। कोई मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन या इस तरीके का नहीं है, बट मैं एक 15 सालों के बीच में जो मैंने सीखा है और जो मैं एक लोगों के बीच में रह के उनकी जो चैलेंजेस हैं, मैंने जो देखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने एक वीडियो भी मैंने भेजा है। मैं चाहूँगा हितेश जी से कि वो वीडियो यदि है आपके पास तो प्लीज़ उसको ज़रूर पहले उनको दिखाएं, देन हम उनको उसी विषय पे साझा भी करेंगे कि किस तरीके से एक ऐसा गांव जो धरनई जहानाबाद, आप यदि बिहार के विषय में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जहानाबाद एक मगध का इलाका है जो बोध गया के बीच में ये गांव पड़ता है। और ये मेरा अनुभव 2014-15 के बीच का है, जो ये गांव के विषय में मैं थोड़ा सा बस बैकग्राउंड बताऊंगा। ये गांव 40 से 50 साल हो, जब से आज़ादी हुआ, इसमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं था, मीन्स की कोई भी ऐसे मूलभूत सुविधाएं नहीं था जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए। तो इसको लेके हम लोग ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था बिहार में ड्यूरिंग द एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मैं इन्वॉल्व था उस समय। और ये प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में था कि किस तरीके से इस गांव की वो सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए जो कि सस्टेनेबल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के अलावा
क्लीन एनर्जी को भी मूल रूप उनके बीच में सुचारू रूप से दिया जाए। तो मैं हितेश जी से कहूंगा कि उस गांव का एक वीडियो पहले चलाए। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो क्लीन एनर्जी विद द वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर है। तो मैं पहले चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले देखें एंड देन हम मैं आपको प्ले कर रहा हूँ अभी। हाँ जी जी हितेश, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। बुद्धं शरणं गच्छ। बिहार राज्य की आध्यात्मिक स्थली बोध गया आज भी साक्षी है उन अविस्मरणीय पलों की जब भगवान बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हुआ था। यहीं से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड का गांव धरनई, जो कुछ वर्ष पहले तक विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ था, सौर ऊर्जा द्वारा बिजली को लेकर आत्मनिर्भर बन चुका यही गांव आज ग्रामीण विकास की दिशा में एक पहचान बन चुका है। कहते हैं रोशनी की कीमत वो बखूबी जानते समझते हैं जिन्होंने अंधेरे को भोगा होता है। यही बात 100% लागू होती है धरनई ग्राम पंचायत के तहत आने वाले 3 गांवों और एक टोले के बाशिंदों पर। इन गांवों के बड़े बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, मजदूर, किसान, सबके चेहरों पर इसी रोशनी की खुशी साफ दिखाई देती है। आज से 3 साल पहले अगर गांव धरनई के ग्राम वासियों से कोई कहता कि बटन दबाया और बत्ती चली, बटन दबाया और पंखा घूमा, बिजली आई और गांव का विकास हुआ, तो इन्हें ये सपना लगता। लेकिन आज यही सपना हकीकत के ढांचे में ढल चुका है। जी हाँ, ग्राम धरनई रोशन हुआ है सूरज की ऊर्जा से, सूरज के ताप से, सूरज की चकाचौंध से, और अब तो पूरे देश में इसे जाना ही जाता है सौर ग्राम धरनई के नाम से। मखदुमपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव धरनई और कुछ अन्य गांवों को सौर ऊर्जा संपन्न बनाने की योजना अक्टूबर 2013 में तैयार की गई और मई 2014 में यानी 1 साल से भी कम समय में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। और इस तरह इस पंचायत के 3 गांव और एक टोला, गांव से गांव को और खेत से घर को जोड़ने वाले रास्ते सौर ऊर्जा से रोशन हो गए। एक सोलर पैनल होता है, उसमें सोलर पैनल से आप धूप में रखिएगा, वो साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो सन है वो पूरब से आकर के पश्चिम में जाता है। तो मतलब कि अगर हम साउथ फेसिंग रखेंगे तो वो है कि मैक्सिमम टाइम उसको सूरज मिलेगा। उसके साथ फिर हम लोग उसमें बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जो अपना सोलर प्लेट होता है उसमें सिलिकॉन स्ट्रिप लगे होते हैं, वो सिलिकॉन स्ट्रिप कलेक्ट करता है वो सनरे को और एनर्जी के रूप में वो ट्रांसफर करता है। सोलर प्लांट यहाँ पर आया है, सबको लाइन बिजली मिल रहा है। पहले लोग अंधेरे में रहते थे, आज बिजली में रह रहे हैं। गांव अंधेरा था, लड़के को पढ़ने में कठिनाई होता था, इससे लाइट मिलता है, पंखों चलता है। बिजली है तो थोड़ा बहुत लड़कन भी पढ़ता है, लिखता है। इस रोशनी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है बच्चों की शिक्षा पर। डिबरी की हिलती डुलती रोशनी से जहां किताबों के प्रति बच्चों का रुझान खत्म सा हो गया था, वहीं अब वो अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लेते हैं। शिक्षा के प्रति बच्चों की बढ़ती रुचि भविष्य की दिशा में एक सुनहरा संकेत है। हाँ, खास बात ये है कि क्षेत्र की लड़कियों के शिक्षा प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। अब ग्रामीण रास्तों पर पैदल या फिर साइकिलों के द्वारा स्कूली लड़कियों की उपस्थिति जहां तहां नजर आती है। जब से सोलर का आगमन हुआ है, सोलर आया है, जब से हम लोग पढ़ भी पाते हैं अच्छे से, परसेंटेज भी अच्छा आया है एग्जाम में, और अगल बगल गांव में स्ट्रीट लाइट भी है जिससे रोशनी बनी रहती है और आने जाने में भी सुविधा है। ये माइक्रोवेव टावर इसी सौर ऊर्जा से ही संचालित होता है, जिसके कारण गांव के लोग देश दुनिया से जुड़े रहते हैं। इसी तरह सौर ऊर्जा की वजह से ही किसानों के हालात भी बदले हैं। दिन में 3 घंटे भी अगर सूरज की रोशनी रहे तो इतनी बैटरी चार्ज हो जाती है कि जरूरत के काम पूरे हो सकें। ऐसे में किसान अब अपने खेतों से अधिक और बेहतर फसल हासिल कर पा रहे हैं। यही कारण है कि किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में खासा सुधार हुआ है। रोशनी की मौजूदगी में ये महिलाएं अब अगरबत्ती बनाने का काम आसानी से कर लेती हैं।
फिर चाहे दिन हो या रात। बल्ब की रोशनी ने इनके काम को ही नहीं, जीवन स्तर को भी सुधारा है। यहाँ की महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक हुई हैं। स्वयं सहायता समूह सक्रिय हो गए हैं। आंगनबाड़ी की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। अब यहाँ जिंदगी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है। हम अपने घर में या तो शौचालय का निर्माण करेंगे। यदि हमारे घर में अभी शौचालय नहीं है तो हम अपने घर में तुरंत कच्चा शौचालय बना सकते हैं ना दीदी। और यदि हम खुले में जाते हैं उसमें हम टट्टी पर मट्टी डाल सकते हैं। अपने बच्चों को खाना खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोना है। उनको खाना बनाने से पहले आप साबुन से हाथ धोएंगे। शौच से आने के बाद हम साबुन का उपयोग करेंगे। इसीलिए हम लोगों को यह चाहिए कि हर घर में शौचालय का निर्माण हो। नाटक देखो। धरनई की महिलाएं स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं। इसका एक बड़ा प्रमाण है यहाँ की उत्साही महिलाओं द्वारा स्वच्छता को लेकर मंचित किए जा रहे नुक्कड़ नाटक, जिनमें वो बेहद प्रभावी ढंग से न सिर्फ स्वच्छता के बारे में रोचक मनोरंजक ढंग से किस्से कहानियां करती हैं, साथ ही खुले में शौच के दुष्परिणामों को लेकर सचेत भी करती हैं। इन नुक्कड़ नाटकों के कारण यहाँ काफी बदलाव देखने में आया है। गांव की स्थिति में बदलाव के लिए ग्रामवासियों का सहयोग, गांव के मुखिया का नेतृत्व और विभिन्न योजनाओं से संबंधित अधिकारियों की सकारात्मक सोच, इन सब के कारण ग्राम पंचायत धरनई में केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं अपना खासा असर दिखा रही हैं। पूर्व वाला 5 साल कार्यकाल में लगभग 350 घर बनाया सर, अनुसूचित जाति और जनरल में। अच्छा, आइए अब बात करते हैं ग्राम पंचायत धरनई में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति की। केंद्र और राज्य सरकार के मिले जुले प्रयासों से चल रही वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन योजनाओं का लाभ यहाँ के पात्र लाभार्थियों को नियमों के मुताबिक मिल रहा है। अभी तक ये लाभार्थी अपनी मासिक पेंशन नकद रुपयों के रूप में हासिल कर रहे हैं, मगर बहुत शीघ्र पेंशन की रकम उनके बैंक खातों में जमा होने लगेगी। और अब अगर हम गांव धरनई में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रही स्वयं सिद्धा महिला विकास सहकारी समिति का जिक्र नहीं करेंगे तो हमारी बात अधूरी रहेगी। आज इस समिति में 1200 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह शामिल हैं और बड़ी तादाद में ग्रामीण महिलाएं इस समिति से लाभान्वित हैं। स्वयं सिद्धा महिला विकास सहकारी समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धि है बिहार राज्य में महिला सहकारी समिति द्वारा पूरी कामयाबी के साथ संचालित पहला महिला बैंक। इस बैंक का संचालन समिति की सदस्य महिलाएं स्वयं करती हैं। यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही सदस्य बनाया जाता है और उन्हीं को विभिन्न कार्यों के लिए जरूरत के मुताबिक ऋण भी दिया जाता है। यहाँ से मैं 25,000 रुपया लोन ले गए थे। लोन से चक्की मिल खरीदे थे। 10,000 घर से पूंजी लाए थे और 25,000 यहाँ। अपनी दास्तान की शुरुआत हमने बौद्ध नगरी गया से की थी। धरनई के आसपास के क्षेत्रों में भी बौद्ध संस्कृति के चिन्ह मौजूद हैं। धरनई से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही करीब 2500 वर्ष पुरानी बौद्ध कालीन गुफाएं हैं। यहाँ देश विदेश से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। हाँ, पुरातत्व महत्व के इस स्थान पर हर वर्ष सावन के महीने में मेला लगता है, जो यहाँ के लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर देता है। गांव धरनई सांझ ढलते ही सौर ऊर्जा की रोशनी से रोशन हो उठता है। दिन भर के काम के बाद ग्रामीण अक्सर चौपाल या फिर मंदिर के आंगन में आ जमा होते हैं और ऐसे में इन ग्रामवासियों के सामूहिक कीर्तन से पूरा इलाका गुंजित हो उठता है। ये स्थिति ग्राम पंचायत धरनई के अन्य गांवों में भी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर ये पंचायत क्षेत्र अपनी सामूहिक सहभागिता के कारण विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यही कामना अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है। बहुत ही वाइड कवरेज है और काफी काम इसमें हुआ लग रहा है ऑलरेडी। तो ऐसा ही अगर ये दूसरे गांव में या दूसरे पंचायत क्षेत्रों में रेप्लिकेट
होने में क्या चैलेंज है, करने का उसमें मिशन में इंक्लूडेड है या नहीं है, इस पे थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें। नवीन जी और संजय जी। संजय जी आपकी आवाज तो नहीं आ रही है माइक पे। नवीन जी आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें तो। संजय जी आप बिना हेडफोन के अगर बोलेंगे तो शायद आवाज आ जाएगी। एक्चुअली जी हाँ जी नवीन जी। जी सॉरी, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था। हाँ जी अब वीडियो मैं ऑन कर लीजिए। हितेश जी आप, जी जी जी। ये जो आपने जो देखा अभी, एक्चुअली ये मेरा बताने का प्रयास है कि किस तरीके से एक्चुअली आज का जो विषय है जो हमको बात रखने के लिए मिला है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, जो कि एसडीजी गोल 6 है। ओवरऑल एसडीजी गोल का पूरा ओवरऑल मकसद है कि किस तरीके से सस्टेनेबल रूप से वाटर एंड सैनिटेशन को सभी आम पब्लिक के बीच में पहुंचाया जाए, मूलभूत सुविधाएं दी जाए। तो आपको बताऊं कि इस गांव में लगभग 40 से 50 सालों के बीच में न बिजली था, न उनके पास जो सड़क और भी सारे मूलभूत मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं था। जहां तक क्लीन वाटर हो या उनके पास सैनिटेशन की सुविधाएं भी। तो आप जिस तरीके से वीडियो में देखें कि ये मेरा कहने का प्रयास है कि एक छोटा सा शुरुआत से किस तरीके से एक मूल रूप परिवर्तन आया है, वहाँ पे एक चेंज आया, सोशल डेवलपमेंट चेंज आया, एक पॉजिटिव चेंज आया है। वहाँ पे सोशल इंक्लूसिव माने कि सारे इनजस्टिस, कोई भी ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं है समाज के बीच में, या वो कोई भी कैटेगरी का हो, वो सारे लोगों के पास वो मूलभूत सुविधाएं दी जा रही। मीन्स मेरा कहने का मतलब है उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई भी भिन्नताएं नहीं रखा गया है। तो हम लोग इसको एक इंक्लूसिव ग्राउंड लेवल चेंज के रूप में हम लोग ने इसको डिफाइन किया था कि किस तरीके से सारे मूलभूत सुविधाएं सभी लोगों के बीच लेके जाया जाए। और इसमें 100% वाटर सप्लाई है इस गांव में। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं, इस गांव का 100% वाटर सप्लाई है। यहाँ पे 100% टॉयलेट्स बने हुए हैं, सभी के घरों में टॉयलेट्स हैं। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। इसके अलावा यहाँ पे रोड, सड़क, साथ बैंक, बच्चों के लिए हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, साथ साथ वहाँ पे जो महिला सुरक्षाओं के लिए स्ट्रीट लाइट करीब 70 से 80 स्ट्रीट साइट लगे हुए हैं। इसके अलावा किसान प्रशिक्षण प्रशिक्षण भवन है, जहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ पे छोटा एक सेक्रेटेरिएट है जहाँ लोग अपनी सारे बीडीओ एंड सीईओ सभी लोग वहाँ बैठते हैं, उनकी सारी मूलभूत परेशानी को दूर किया जाता है। साथ साथ वहाँ पे एसडीजी ग्रुप है जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड के मॉडल पे काम करते हैं। साथ साथ वहाँ महिला ग्रामीण बैंक है, छोटा ग्रामीण बैंक है, वे बहुत स्मॉल लोन्स के लगभग 50,000 25,000 लोन लेके महिलाएं अपना काम करती हैं। तो इस तरीके से एक मॉडल हम लोग ने क्रिएट किया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। पिछले 2020 में जो पंचायती राज दिवस के दिन इस गांव के जो मुखिया जी हैं उनको इनवाइट किया गया था कि अपनी बात रखे, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके अपनी बात को रखें। तो इस तरीके से ये गांव की प्रशंसा सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरों पे किया गया। अब थोड़ा मैं कहूँ कि अब मैं एसडीजी गोल के विषय में बात करूँ तो लगभग अभी भी जो है वो अभी लगभग 80% जो पॉपुलेशन है, लगभग 666 ग्लोबल मिलियन लोगों के पास आज भी वो सुविधाएं नहीं है जो मिलना चाहिए। लगभग 500 मिलियन लोग हैं जो इंडिया में जो ड्राउट्स के वजह से पानी उनको नहीं मिलता है। 20% ओवरऑल 20% पॉपुलेशन जो है वो आज भी जो स्टेट्स में है जिनके पास ओपन डिफिकेशन अभी नहीं किया गया। माने ओवरऑल तो गवर्नमेंट का है कि पूरा ओपन डिफिकेशन लगभग मेरे सभी लोगों के बीच में टॉयलेट है, फिर भी अभी भी चीजें अभी भी है कि जहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो मैं कहूँ कि आज यदि चर्चा में यदि मैं सबसे सहयोग मांगना चाहूँगा
कि यदि एक मूल मकसद को लेकर चला जाए कि हम अपने कम्युनिटी ड्राइवन प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों के बीच अपने सोच के थ्रू लोगों के बीच वो मूलभूत सुविधाएं दे जो लोगों को रिक्वायर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नल जल परियोजनाएं और घर घर में शौचालय, माननीय प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा भी ये सारी सूचनाएं चल रही है और मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ये परियोजनाएं लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए बनाई गई है और हम लोग सारे लोग इस चीजों के विजन को लेके जाए कि जो सरकार की जो अच्छी परियोजनाएं हैं जो लोगों के बीच जानी चाहिए उसको लेके जाए और उनसे लोगों को बेनिफिट कराए। तो यही मेरा कहना है और भी मैं शेयर करूंगा कि और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी कभी भी और भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहां हम अपनी बात को रख सकते हैं तो जरूर मैं कहूंगा कि जरूर हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और मैं बिल्कुल, इसमें नवीन जी दिल से जो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म है उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग भी इन 17 गोल्स पे काम कर रहे हैं उनको हम सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स नेटवर्क से जोड़ दें, जिससे कि जैसे अब ये वीडियो आपने जो दिखाया ये हम में से किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो कुछ काम जो हो चुका है देश के किसी भी पार्ट में वही ऐसा का ऐसा अगर उस इंटेलिजेंस को हम डेवलप कर चुके हैं कि वो कैसे किया गया है तो उसको हमारा जहां तक भी नेटवर्क फैला हुआ है वहां तक लेके जाया जाए और धीरे धीरे इस तरह की चीजें जो है हर एक गांव में, हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में ये पहुंच जाए। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की तो जो वाइज सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम विजडम सिटीज भी कह रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें जो है प्रॉपर ढंग से वननेस के द्वारा पूरी कंट्री में एक जैसी बनाई जाए। कुछ कुछ फर्क हो सकते हैं टेरेंस के बेस पे, डेमोग्राफी के बेस पे, लेकिन मोर और लेस जो है वो डाइवर्सिटी से वननेस की तरफ को मुड़ती हुई सिटीज जो है वो बने। तो आप डेफिनेटली प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और उसके साथ मिलके, क्योंकि हमारा मेन जो कोर टीम का जो काम है वो ये है कि जो डोमेन एक्सपर्ट लोग हैं उनको सरकार के साथ, सरकार को डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करने की जो लीडरशिप है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जो लीडरशिप है वो हम बनाएं। तो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम भी है जिसका हम मास्टर क्लास करने जा रहे हैं 23 तारीख को, तो आप 23 तारीख को वो भी अटेंड कीजिए और देख लीजिए कि किस लेवल की चेतना की और लीडरशिप की हम बात उसमें कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये कोलैबोरेशन रहेगा नवीन जी। और अभी इसमें आप में कुछ और ऐड करना चाहते हैं या संजय जी के पास चले हम? बस मैं एक लास्ट बताऊँ, ये गांव जो है वो भारत के 10 ऐसे, यदि आप गूगल में डालेंगे तो 10 ऐसे गांव हैं जो भारत के महत्वपूर्ण इनोवेटिव विलेज है, तो उसमें एक ये भी गांव है जिसमें मेघालय का भी है, जिसमें तमिलनाडु का भी, पूरे 10 गांव को चयनित किया गया है, जिसमें एक धरनी गांव को भी स्थान दिया गया है। ये एक विलेज है जो कि कम्युनिटी ड्राइवन माइक्रो प्रोजेक्ट, जो कि अपना बिजली खुद बनाती है और अपना बिजली खुद अपने गांव को रोशन करती है। तो ये गांव को इनोवेटिव विलेज के रूप में दिया गया है दर्जा, इंडिया टॉप 10 इनोवेटिव विलेज इन इंडिया। तो यही मैं बहुत अच्छा। तो मैं आप मुझे शाम को एक बार कॉल कर लीजिएगा, तो एक बार कैसे प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म में आप जुड़ सकते हैं वो उसके बारे में चर्चा कर लें। तो अब चलते हैं संजय जी के पास। संजय जी आप एक बार माइक टेस्ट कर लीजिए अपना। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद ऑडियो कनेक्टेड ठीक। आपका जो ऑडियो माइक मैं कहूँगा एक मीटिंग है मेरा, तो मैं अभी थोड़ा लीव कर रहा हूँ, मे बी मैं 10-20 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करूंगा। एक मीटिंग है मेरा तो मैं भी अभी जा रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज संजय जी बाकी संभाल लेंगे। संजय जी आपका माइक तो नहीं चल पा रहा है, आप ऑडियो एक बार अलग से टेस्ट कर लीजिए। इन द मीन टाइम हम चलते हैं, एक और हमारे पास जल के कार्य में ही एक्सपर्ट हैं अवेलेबल, ऑल्दो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन था उसमें 2 लोगों का नाम नहीं है, रक्षित अंबा जी और उपेंद्र ढोंडे जी, सॉरी रक्षित अंबा जी एंड संजीवा गांधी जी।
तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं आए हैं। उपेंद्र ढोंडे जी जो है हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में है। तो कुछ समय के लिए मैं चलता हूँ रक्षित अम्बा जी के पास। रक्षित जी, आप सुन पा रहे हैं? एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। संजीवा गांधी जी, आपको भी वो परमिशन दी गई है, एक बार आप पैनलिस्ट वाली परमिशन ले लीजिए। संजीवा गांधी जी, क्योंकि 5 मिनट में हमारे शेड्यूल टाइम के हिसाब से उपेंद्र दादा ढोंडे जी, जो कि एक और जल एक्टिविस्ट हैं, तो उनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। संजीवा गांधी जी, आप पैनलिस्ट स्वीकार कर लीजिए। ओके, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रक्षित जी, एक बार आप वीडियो अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो और ऑडियो। अभी बने हुए थे रक्षित जी, हो सकता है बीच में कहीं चले गए हों। तो इन द मीन टाइम लेट अस नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फॉर्मल सेशन with Mr. Upendra Dhonde ji. So may I invite my colleague Arvind Tiwari ji to invite Upendra Dada Dhonde ji on the dais. Arvind ji, over to you. आप म्यूट पे हैं अरविंद जी? Now I'm audible. Yes, yes, please go ahead. Mr. Upendra Dada Dhonde ji, सहज जलबोधकर मिशन इजी वाटर लिटरेसी। He is MSc Geology from Solapur, PG Center of Shivaji University, when an ambitious scheme called Chalyukt Shivar, introduced in Maharashtra during 2014, Upendra Dhonde ji, as groundwater scientist, gave a very clear-cut warning that an approach to manage groundwater resources by involving celebrities of different fields can give short-term results, but same will certainly result in an unintended but very harmful consequences in the long term due to limited technical knowledge and no accountability. And this warning has been found correct within few years. There was flood of non-technical persons in water sector who were involved in making water structures in the name of people's participation. These raw hands had disastrous effect in water sector. This not only harmed government scheme, but also resulted in setback to water literacy. Upendra Dhonde not only stopped with issuing warning, but he has also given a solution for this. That is socio-hydrogeology approach. Everyone agrees that people's participation is must for any government scheme to be successful. But Upendra Dhonde ji said that such people's participation must be ensured with sound technical knowledge. It was an irony that this important aspect is being continuously ignored and thus invites trouble, as happened in Jalyukt Shivar scheme in Maharashtra. Hence, as a remedy to above, Upendra Dhonde ji started a movement called Sahaj Jalbodh Abhiyan, that is Mission Easy Water Literacy. This mission aims to literate the stakeholders by using the tools like making scientific knowledge of hydrogeology available in easy to understand local language and ensuring a long drive to reach the stakeholders. Under this mission, he has written and published 8 books and also made available online 15 PDF books on hydrogeology topics, which covers technical knowledge requirements of layman. He wrote more than 1,000 articles and posted on social media so that readers can get the knowledge for free. During year 2014 to 2021, Upendra Dhonde delivered more than 200 lectures and arranged more than 100 workshops. After emergence of Corona pandemic, he has started delivering lectures online and till date delivered more than 200 lectures in 2 years. Also, under this mission, he runs an online 10 days hydrogeology course and completed 10 batches till date. He has many videos, interviews on various hydrogeology topics available on social media platforms
Upen Dhondeji is a government officer and fully devoted his life for this water literacy mission. He uses all the Saturdays, Sundays, and other holidays for this work. Also, he tries to be available online in morning, early hours, and evening late hours. This decision has resulted in creation of massive followers in Maharashtra. There is demand from outside the Maharashtra as well, as few from other countries, but he politely refuses by saying that he has many commitments, first as government servant and then family obligations. He first wants to perform his government duties honestly, and then whatever time he gets, he uses it for the mission. He is our Upendra Dada Dhonde. Ji, Upendra Dada Dhonde ji, you are welcome to this forum. Welcome, Upendra ji. Welcome. धन्यवाद. Very good afternoon to everyone. I hope I am very much clear, audible to everyone. Yes, you are audible, Yes, and video is also okay. Yes, please proceed. So it is a privilege to be here in front of you all, and I'm here to put my views on specifically the UN SDG 6. That is, you all know that the United Nations Sustainable Development Goals, the 17 goals. Out of that, one is the clear water and sanitation. To be precise, in words, and sustainable management, water and sanitation for all. So I am going to enlighten this issue with some of my examples, which are as a easy water literacy. Basically, it is a water literacy program. So I just want to give introduction of my whatever work we are doing, and that's why I haven't prepared any PPT or presentation here. So I will just talk, and hope the audience will get some positive inputs from it. So everyone knows the critical importance of hygiene, especially during Corona pandemic. It is highlighted more, as WHO guidelines also says that hand washing is one of the most effective action as you can take to reduce the spread of pathogens and prevent infectious diseases, especially this Corona, this COVID-19. So it has demonstrated that how this hand lives and how adequate access to the clean water is important for preventing and containing this disease. Basically, this hygiene, sanitation, and availability of water goes hand in hand. Lot has been said that worldwide substantial progress has been made in increasing the clean drinking water availability, but real fact says something else. That with population growth, urbanization, frequent extreme weather conditions that have cumulatively affect the water availability, especially groundwater. I'm a groundwater scientist, so I am more concerned with that part of this aspect. And that has all resulted in unfavorable hydrological, ecological, and environmental changes. Particularly, the most affected part is the rural communities, because they are heavily affected because of their poor adaptive capacities. Cities have some solution, but the rural part, it gets affected very worse. So billions of people, mostly in rural area, they still lack basic needs of clean water and hygiene. If we go in some figures worldwide, 1 in every 3 people do not have access to safe drinking water. 2 out of 5 people do not have basic hand washing facility. As far as this SDG goals progress of India is concerned,
Kerala tops the score. But as a whole, if as a India, if we say, so our number is not that much encouraging. This issue of hygiene and availability of clean water, as it is, as said, to give one example, government always insists hygiene time and again. You all know, government takes many initiatives like for example, one subsidized scheme for having toilets at every households. But in spite of such positive initiatives by government, more than 673 million people still practice an open defecation. This is worldwide figure. Why? Because people discouraged to accept such schemes just because of non-availability of enough water. पानी ही नहीं है, टॉयलेट बना के क्या फायदा? बहुत जगह पे ऐसा होता है. At many places, when I visit during my field work, so government has constructed the toilets, so people are not using it. And they are using it for some other purpose, like a storage go down and all. When we used to ask them, "Arey, government आपको इतना अच्छा बना के दिया है, why you are not using it?" Then they used to say, "Sir, पानी नहीं है, पहले पानी का प्रबंध करो, फिर तो हम टॉयलेट का जो ओपन डिफिकेशन है उसके बारे में सोचेंगे." So this is the condition at specifically in rural areas of the country. Currently, around 1/3 of world's population is living in water stress condition, and sadly, it will increase by 2/3 till this 2025. So this economic growth and urbanization due to the rapid population that increases stress on the freshwater supplies. So out of all these existing freshwater reserves, the limited freshwater reserves, about 50% of the population depends on groundwater. Again, what I said, that being a groundwater scientist, I am always concerned more with the groundwater conditions. And it is reported that 1/4 of the world population has to travel at least a round trip of 30 minutes or more from their premises, from their houses, to fetch the potable water. Sometimes it is 2 kilometers, sometimes it is more than that. So considering the finite, limited volume of these freshwater resources, its sustainable management is a global challenge. It's not a challenge of, as my work is mostly, I have restricted it in Maharashtra state, but this particular subject is not the only question of Maharashtra. It is a global challenge. So in my opinion, we have to think upon need of change in governance system. The world need big environment friendly reforms by considering that the focal point of all this vulnerability of the rural people, the serious issue is water resource availability, and that too groundwater availability. And not only that, the future interactions between the human and water systems, it is also very serious concern. And our work, that is called as Sahaj Jalabodh Abhiyan. Sahaj Jalabodh Abhiyan is a Marathi word. English translation of that is Mission Easy Water Literacy. So we insist the same as SDG 6 has been seeking, and we are trying to give a solution in this regard. We sincerely feel that the SDG 6 cannot be achieved with current pattern of government schemes and rules, which tends to make the long-term predictions very unrealistic. Whatever data we are collecting, whatever schemes we are forming, they are failing to just predict the future concerns. As why it has, because the interactions and bidirectional feedbacks between human and water systems cannot be captured here. And we claim that the significant progress towards water security will rely on people's participation. And what needs to be changed is people's participation for getting the very accurate data at local level, at we can more precisely say micro watershed level, to ensure the environmental sustainability on the water. Presently,
as a government department, be it a state government department or be it a central government department, the present human resources engaged by the government are not sufficient to perform this task. And for this, we need people's participation. People's participation doesn't mean only followers. We should have fully educated, fully trained peoples for this to participate. So as said, the global challenge, as I said earlier, where the rivers are exhibiting a very significant changes in annual runoffs. Almost 90% of the rivers are almost in dying condition, as well as their quality is also causes socio-cultural practices to change at local level. In addition, examining and understanding the link between the mental health and water scarcity is very important from human well-being perspective. But despite its high importance, I think such issues are often ignored in the policy making processes. Earlier, right now, in some latest schemes, it has been considered now. I will refer ahead. But yes, we strongly believe that issues of water resource management and its relation with human well-being are understudied. It is underperformed, understudied. Now let's have a brief what we are doing as a mission. Our mission, which is called as Mission Easy Water Literacy, it is a sort of a socio-hydrogeological experiment. It is to inspire and increase the people's participation for the smooth implementation of the government or non-government scheme, any government or non-government scheme. Part of that already introduced by Sri Tiwari, that this all started in 2014. A ambitious scheme called as Jalivit Shivar was introduced by Maharashtra government in 2014 as a ground servant. I very promptly gave a very clear-cut warning to that government, that an approach to manage such groundwater resources by involving the celebrities of different fields, not from the groundwater sector, for people's participation, to encourage the people's participation. It can give short-term results. You can see large number of followers, you can see number of people performing in the field, but it will certainly result in an unintended but very harmful consequences. As I said, these are long-term consequences. At that time, no one bothers to pay height to this suggestion. The reason is why I am saying that it will have long-term consequences, because my concern was that particular people's participation was with limited technical knowledge and literally no accountability. Everybody through celebrity and all other resources, they are entering the water sector, they are doing many things, but with no accountability, no perfection in the technical things. And very unfortunately, my warning was correct, and the entire 5 years were wasted, and the very ambitious scheme now has to face many allegations by all sort of people from the society. Although the scheme was very positively oriented, and on paper it was very good, but where it failed in the approach of the people's participation. There were non-technical persons in the water sector as a celebrity who were involved in making the water structures in the name of encouragement for people's participation. Yes, no doubt everyone agrees that people's participation is must for any government scheme to be successful. But whether such people's participation be ensured with sound technical knowledge, it was very irony that this important aspect is continuously ignored, and thus that invited the trouble.
So these raw hands had disastrous effect in the water sector as far as Maharashtra is concerned. And this not only harmed the government scheme, but it has also affected as a setback to the water literacy. People were not turning towards to learn the things, the technical things in the water sector, the technical aspects in the water sector, but only the thinking they are doing work, but they don't, they were not bothering about what will be the ill effects of whatever work they are doing. And so at that time, we decided to give an alternative solution as a remedy to all what is happening in water sector. And this is we named as Sahaj Jalabodh Abhiyan, the mission Easy Water Literacy. Our aim was to literate the stakeholders, the last man who is for whom these all government schemes are intended for. So our ambition is like to literate the people by using the tools like making scientific knowledge of hydrogeology available in easy to understand local language. So local people should understand what are the technicalities in the government scheme, how it is going to be implemented in our place, how it is going to be benefited for us, what sort of technicalities the person or contractor or government person or any other person who is involved in it, what he is doing, local person should know. And thus we want to ensure a long drive to reach stakeholders. So under this mission, first we started with writing and publishing the books, because study material has to be there. Earlier there was not no such study material was available in local language. For Maharashtra it is Marathi. Everything was available in English only, and that too in academics books. So local person never goes and buys these academic books and learn the things. So first of all, the priority was to make available them scientific literature in their own local language so that they can understand it. So, and laymen should understand all these things, whatever written in that literature. Along with that, book published, but everyone is not in position to purchase the books. They may not willing, or there may not be any such encouragement. So for that, I use social media, and I started writing articles on different topics of this hydrogeology in Marathi language, and posted on social media for free, so that readers can get it very easily. And that happened. So we, whatever we have intended, we got a very good results. So during 2014 to 2021, we arranged almost more than 200 lectures in the field at different places, and 100 workshops, sort of Jala Parishad, Jala Shibir, like that. And after Corona, we had some setback, because there were limitations to arrange such programs. So then we started arranging programs online. And during Corona pandemic also, we were successful in conducting almost 200 such programs in last 2 years. So along with that, those who are more keen to, more interest having in studying the things, for them we started 10 days course. And till date, during that course was started after Corona pandemic only. So now till date we have completed 10 batches, and everything is going on smoothly and with a very good result. Along with that, we are using the this press and media and everything, interviews, videos, whatever some incidences or some things happens in local this water sector, we used to clarify the things. Like for example, now Atal Bhujal Yojana, central government's very ambitious scheme has been launched, and what we have started, that we are telling people how this Atal Bhujal Yojana is very useful for them, how it has to be implemented in their villages, how this people's participation with this government infrastructure has to be connected, or that network has to be created, and all such things we used to tell them through the online webinars and the site visits and workshops and etc.
though I am a government servant, lots of people think they consider me as a social activist, but it is not there. I am a government servant, and I have decided to fully devote my extra time other than my government duties time for this water literacy mission. So I'm using all my Saturday, Sundays, the gadgetry holidays, everything. I am almost 24-hour engaged. All the time I am available for the people who are having the queries in the water sector, and though it late hours, though it evening hours, all the time till morning 5 o'clock to evening 11 o'clock, I am always engaged with all my audience. So I'm getting the fruits also. This all dedication has resulted in creation of massive, and they are doing very good work. So basically what we are teaching here, there are three main basic ideas. One is Nisarga Bet. It is again a Marathi word. Meaning is plantation method has to be mandatorily supported with the water harvesting structures. All the time what we say that what we see, the plantation drives were taken off, but they don't consider water harvesting along with that, and they used to fail. So we have introduced such Nisarga Bet system. Then another concept is water security plan. In Marathi, we call it as Jala Arakhada. For the whatever planning government does, because of limited manpower and resources, that planning is of somewhat a regional perspective. But what we encourage that at local level, at micro watershed level, at village level, there should be a water security plan prepared by them themselves, the people of that village itself, not by government. And the third idea, that is Tristariya Punarbharan, again a Marathi word, that means multi-layered recharge system, where we consider the recharge of the shallow aquifer, the recharge of the middle aquifer, the recharge of the deeper aquifer at the same time. So these three main concepts we used to teach on our mission, and till date, since last 2-3 years, we had 22 Nisarga Bet sites. So the smallest size is of 1 acre area, and the biggest one is of 300 acres. Then we have almost 50 this multi-layered recharge systems, 125 Jala Arakhada in villages, and thousands of followers who used to study the Mission Easy Water Literacy course and implement the things in their areas. So now what we got from all this, that there is a drastic change in attitude, as a sound technical knowledge has become a must criteria for the people's participation. Now people know, though they are encouraged for the people participation. First of all, they ask whomever is taking initiative, or whomever is taking leadership, whether he is having that sufficient technical knowledge or not. So there is no now blind faith on so-called celebrities. Whatever they will ask, we will do. Like now people are not doing like that. Now there is also increasing faith in government systems. So Maharashtra government, the Maharashtra State Groundwater Department people, they used to tell me that now people since last 2 years, they are coming to the this groundwater scientists and for taking advices for these technicalities in the water field. We have introduced one idea, Ek Gaon Ek Talav. That means a pond or lake in every village. Whatever the old ponds, we are asking people to participate and rejuvenate the same, inspiring people to take up new village ponds. Nowadays there is a very scarcity of the land and all these things, but we are encouraging people and they are responding also. More than 100 organizations and thousands of individuals are benefited through this mission. So major impact, if we can say, is that now everyone has understood the importance of technical knowledge in Maharashtra government. When I say that in Jaliyukta Shivar 2014, they have not bothered to pay attention to our warning, but in 2018-19, they have revised the guidelines of Jaliyukta Shivar and included what concept Atal Bhujal Yojana by Center is almost a perfect example of how a program should be planned for the water security. So it has also included the
mandatory this water security plan for the village. So this mission, those who want to participate in these missions, basically three things we are trying to tell them and motivate as a water activist or as a person taking part in this water sector. First one is to promote the water literacy. There is a big scope in that. To link an implementation of government scheme with the people and direct action program. So first, what is promoting water literacy? So there are many people who wants to work in water sector, not full time but part time also. Though your main job or your business for your subsistence is different, there is a lot of scope to work in spreading the water literacy in society, and this requires some knowledge. Or so there are about 70 subjects in our course. You can choose some of these topics and study them in depth. For example, our Nisarga Rakshaks, we name them Nisarga Rakshaks, the participants who are engaged with our mission. We used to call them as the Nisarga Rakshaks. What they used to do, they for this promoting water literacy, they used to conduct a workshop on pond construction, workshop on village planning, a nature cure workshop, students and women's role, workshop on government scheme guidelines, dugwell or borewell recharge scheme, watershed treatment workshops, etc. So the group of people that will participate in such workshops, those can be easily connected with the government schemes to perform. Second part is how these government schemes and people's participation should be interlinked. Many government departments implement various schemes, you all know, related to water, but general public many times are not aware about the detailed guidelines of such schemes. The GRs वगैरह issue होते, but criteria for funding, various laws and regulations pertaining to scheme. हमारा गांव में कैसे ये स्कीम आएगी, अगर स्कीम आएगी तो हमारे गांव में उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें, ये सब गांव वालों को नहीं मालूम होता है. So especially in Maharashtra, the water literacy is in such a stage that if you decide that I will go and I will teach the things related to the government's scheme, people will just rush towards you because they want it. So, but very sadly, there are not even a handful of people in Maharashtra who are well versed with such old and new government schemes, what laws and regulations are associated with, how they are changing. We have when these local people goes to the government departments, the government officers' response is also not with much encouraging. So we have to follow all these things very carefully and prove ourselves. So we just encourage our Nisarga Rakshakas to go to the government website, go to the government departments, see the orders, JRs issued from time to time, keep in touch with the organizations, organization heads in the field of water. And all this data has to be segregated, all this data has to be kept with them. And whenever there will be an opportunity to go in some village where that scheme has to be implemented, our Nisarga Rakshakas used to take a workshop and tell people how this government scheme is beneficial for use, how this government scheme is for you only. So now the third part, the important part is the actual action plan. In government implementation, there are different things, but through CSR and through individually inspired schemes, many times not as a part-timer, but some people who are engaged as a full-time workers in such schemes, they also don't have that competent technical knowledge. And at the end, what happens? They give the inferior results. So, for example, we still give an example of very old structures built by this Chhatrapati Shivaji Maharaj, 300, 400 years old. And we used to tell them how good that construction was, how precise was the site selection and all. But whether we have such examples just 50 years back that that particular person or officer from government has constructed a very beautiful site and that has benefited us very
So this pride feeling we don't never see. Whenever people talk about the government, they say that no, government officers are corrupt, no, government officers doesn't work, and this and that. So one has to take single structure to understand in depth its the technicality, acquire the skills to carry out the work in perfect manner. So individuals who do not have fixed income jobs, they should take part in such practical action plans. And we as a mission has identified such persons, asked them to register for the NGR, take a proper education in this particular field, and then implement the work, so that they will have some good work in their hand, and they can satisfy the people as well as the government also. So this our mission motivates the youth to decide their life's goal, choose one of the topics which we gave in our missions in order to fulfill a social responsibility, responsibility towards nature, create a passion among them, build up your strength in that particular subject, and all the time we used to tell them that don't get overwhelmed that, with a success or a failure. We just assure that you just carry on your, you just concentrate on your goal and fulfill your responsibility as a nature conservator, as a water activist. And most importantly, one can certainly do something for the society with a lot of foresight, rather than blindly following a person or organization just because it is famous, nominated, rather than falling prey to the maze of the position and the money and prestige. So why we feel that our mission is so important and a guaranteed success as a solution to the present day water challenges as SDG 6. So the basic idea behind this mission of easy water literacy is it's a socio-hydrology experiment, and it presents a challenge for water security to manage water scarcity and human well-being for the adaptive management cycle. So here we stress upon the holistic understanding of the complete system of our main objective at the micro watershed level. So such developed models at this watershed level that could be used to anticipate what trajectories might occur in the coming decades. So depending on the present conditions of the human water relation systems, and later on that can be used as a policy formation and decision making. Just I said, I told the example of inclusion of rule regulations to prepare the water security plan and all. So it can be very useful as a pre-disaster planning. So we will not wait disaster to come to our door and then we will start thinking upon it. So we are planning it way ahead. So in traditional approach, what happens, the human activities, they are typically described with the conditions of external forcing of the water system. That means scenario based, मतलब महापूर आ गया तो उसके बारे में सोचो, सूखा आ गया उसके बारे में सोचो, पानी कम पड़ रहा है उसके बारे में, फलाना सिटी में पानी की किल्लत है, ये करो वो करो. तो ये specific scenario based actions होता है. But in our mission easy water literacy, we are not doing that. We aim to describe the interactions and feedback between the social and hydrological system. In one microshed, as on date, whether there is a water scarcity is there or not, whether there is a excess water or less water, it doesn't matter. What we teach to people that in our watershed, ideally what should be there, what should we do with nature, with water, how should we use the water, how should we conserve the water, how should we build the water structures. So these are the things, and what we achieve through this to understanding this understanding of watershed system at local level, collecting the water level data at micro watershed level. In front of government department, there is a big challenge of collecting a micro level data, because government doesn't have that much manpower. Government cannot go to a local village and collect the data at that much minor micro scale. So in this mission easy water literacy, we are aiming that, and we are achieving the success also, that we are getting the people, the team in at village level, and they are forming a Bhujal Mahiti Kendra, that means groundwater information center at a village level, that used to collect all the data in their micro watershed, irrespective of any government help.
data, it will be useful for forecasting and prediction of the issues after analyzing all this collected data, and then it can be used in policy and decision making. Finally, the proper implementation of accurately designed scheme can be possible, and that too very much impartial assessment of the result. So understanding all these dynamics of cultural evolution, as it is important to strongly shape our society, the human and water reactions with one another, or human reactions within them. So all these things in long run, we have to be very careful. What we observed during last 5 years, that participation in this mission is very much encouraged. It is constantly increasing. So among the participants, there is everyone. There are ladies, there are gents, there are young children, there are older ones, there is a 10th pass youth, there is a class 1 officer, there are farmers, there are even people as an expert in different fields also. They are all coming together, and they are believing this mission easy water literacy, and they are interested in performing also. Here we never claim that we teach some rocket science in this course. We just teach very basic simple things of traditional and cultural heritage. हमारे गांव में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें रहती है, बहुत छोटी छोटी चीजें. हम ऐसा कोई हाइड्रोलॉजी की बहुत टेक्निकल चीजें बहुत डिटेल में उसमें सिखाते नहीं है. हम उसमें ये कहते हैं कि हमारा गांव का जो वाटरशेड है, हम मराठी में उसको पान रोड बोलते हैं. Understand the pond load. Each and every people in your village, they must understand their pond load, their watershed. They must know whenever any river or small stream is been diverted, or is some work has been, or some human sort of intersections are there, what effect will have on entire this watershed environment. So people should know. There should not be like that government person from some outside will come, and then he will insist that you people don't do this and don't do this like that. We don't want that forced this bureaucracy to come and force the people. We want people themselves should take care of their own watershed. So in the field of water or environment nowadays, it is very sad that when I say the people's participation, what is happening? Celebrities come, they lure the youth, they say that ये ऐसा योजना करो आप लखपति बन जाएंगे. Then people think that if we associate it with some particular person or some particular celebrity, we will get name and fame, we will get job, we will get this and that. So the basic motto of this watershed conservation and all this, they used to fail. So our only aim, our mission's only aim is that the member who is participated in our mission, from the first day of the training, he must get out in this field of water sector with a new approach towards the socio-hydrology in his heart. So the human water relations could be applied to improve the adaptive measures to manage the local water needs, while mitigating the undesirable changes to the hydrological cycle for that particular watershed. And Sahaj Jalabo, that mission easy water literacy, can be used as an integrated tool to quantify the feedbacks between the water resources and the society at various scales, not only the micro watershed scale, but at various scales, with the aim of expediting the stakeholders' participation for the sustainable water resource management. So this proposed idea is very much helpful to sketch the projections of alternatives that explicitly account for the socio-hydrological system to build. So this will yield both insights into the cause and effect relationships and help the stakeholders to identify the safe functioning space. It also explores how the nexus of human-water relationship could be applied to improve the adaptive measures to manage local needs, while some new technology has been introduced, some new development work has been introduced. So socio-hydrological models can be developed at each micro watershed level with the aim of expediting the stakeholder participation or government schemes to be implemented satisfactorily.
So I expect from the organizers of this program and the audiences who are listening listening to me, that you come forward and think upon the idea which we have introduced in this mission, which is water literacy. I will be happy. Sure, Upendraji, this is really doable. So thank you very much for giving me this opportunity to express my views, and once again very hearty congratulations to organization or these organizers who has conducted such a good program, and I hope I will see ahead that in future we will work together. Thank you very much. Thanks, Upendraji. Wonderful. So it is very widely covered, and you have talked about several stakeholders as well. You can consider defined values consultants and associated organizations also as stakeholders in this mission, because we have taken accountability of all the 17 UNSDGs and are proposing one more goal to these 17 goals, that is self-actualization of all leaders. On 22nd of October, we will do a formal launch of this goal, as well as the entire platform of Self-Actualized Leaders Network. So we recommend that you become a regular participant and part of this SALN and the Project YugParivartan vision. Water, both at the input and output level, is important for managing human life. It's not only just a luxury, but a critical need without which civilizations cannot survive. And most of the time, civilizations, when they initially set up, they do that near the source of a water body. Unfortunately, even though water is being supplied to several cities and civilizations, the quality of that is continuously decreasing. So it's like we are not consuming water these days, we are consuming a variant of water which looks like water but actually is not a water. So somewhere this is killing, badly affecting the health of citizens, because we are still not able to provide them that pure mineral rich water which our human bodies need to survive. So we invite you to become part of Project YugParivartan Synergy Platform, and let us mutually benefit from this association, because when we give people self-actualized leadership development program training, through which we induct people into various networks, we give them one of these 17 goals as one of the 4 dimensions of their mission. We give them 4-dimensional mission, one of which is United Nations Sustainable Development Goal, and empower them by networking them with the right resources. So you could be a very good conduit over there and act as a provider to several support systems that the people would need, whether it is training, whether it is getting to the government departments. All of that would become possible if you become part of Project YugParivartan Synergy Platform. So we definitely invite you for that. Thanks a lot for this wonderful discourse on understanding water. I hope today everyone's water literacy would be growing, at least to some extent. Of course, there is a long way to go, but yes, some beginning has to be made, and this seems to be a good beginning. After the 4 months summit is over, these 17 goals will become a regular platform for discussion, for networking, for fact-finding, data collection, and producing a solution which can take us towards the golden age. So Upendra Dada Dhondeji, we invite you to be part of that. With this, I would like to invite Rakshit Ambaji, who is also into water domain. Although formally we have not announced this session, but we had a very good relationship with Rakshit Ambaji. He is also SALDP graduate, and it was a late finding that he is
also into the domain of clean water and sanitation. So we would like to listen from him impromptu, extempore for at least 10 minutes so that we get more insights about water related issues. Hitesh, before we come to Rakshit Ambaji, I wanted to ask one thing from Upendra Dhondeji, that what exactly he meant by social hydrogeology, and up to what level of standard of people can be made acquainted with it. Sir, what is socio-hydrology? Yes, you have. It is like taking care of our own watershed. Easy way we can say that not relying on the government, but taking the things in our own hand at local level, like collecting data, understanding the issues, and performing the solutions also. So it is a sort of people's participation. So the levels of the persons who can take part and who can perform, what I think I told in my session also, that from 10th pass youth to a expert in a subtopic of the hydrogeology. So some people can be expert in this pollution of the water resources. Some people are expert in the engineering aspects of the things. So all these people, they can be a part of this socio-hydrology. And what they have to concentrate their expertise, they have to concentrate on the specialities of that particular watershed, the area which has been aimed to perform. So this is social. For example, as I think in initially I heard from this Hitesh ji that there are varieties of this geological and geographic these things in entire area. And no single scheme or no single structure can be replicated at each and every place. So we have to go by watershed to watershed, and for that to understand this local people's participation, the cultural knowledge, the traditional knowledge, all things, the local the cultural initiatives. Yes, actually a detailed study for... Just a minute. अगर मैं हिंदी में छोटी सी लैंग्वेज में बताऊं कि अगर मैं एक एग्जांपल के साथ एक ही लाइन में उसका मीनिंग बताऊंगा, आज स्कीम जो होती है वो सेंटर में शुरू होती है और ग्राउंड में खत्म होती है. सोशियो हाइड्रोलॉजी में ग्राउंड में शुरू होकर सेंटर तक जानी चाहिए. दिस इज द एम. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू. तो यार रक्षित जी से निवेदन है कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना, कि आपका इंट्रोडक्शन इतना तो पता लग गया कि यू आर अ पार्ट ऑफ अस एसएलडीपी ग्रेजुएट, सो यू आर सीनियर टू मी एटलीस्ट इन एसएलडीपी ग्रेजुएशन. आई एम जूनियर टू यू, सो आई लाइक टू हैव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हाँ जी, थैंक यू. माय नेम इज रक्षित. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा ना? यस यस, प्लीज. ठीक है. मेरा माय बैकग्राउंड इज इन ऑल प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग. मैं 16.5 years यूएस में रह चुका हूँ स्टडीज और वर्क के हिसाब से, और इंडिया वापस आ गया ऑलमोस्ट 3 years बैक. और अभी मेरा काम चल रहा है मेनली विद कंसल्टिंग कंपनी. रिसेंटली शुरू हुआ ये काम कि जो कंसल्टिंग जो कंपनीज है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी में, वाटर टेक्नोलॉजी में एस्टैब्लिश्ड है, उनके लिए कंसल्टिंग का काम कर रहा हूँ. सो माय प्लास्टिक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड जो है वो यूज हो रहा है अभी. सो प्लास्टिक आई एम ऑफ कोर्स मैरिड एंड हैव अ 10-year-old child. I live in Coimbatore, originally from Hyderabad. Parents are in Hyderabad, and both my brothers and sister are in the US. So ये मेरा बैकग्राउंड है. और रही बात की ये वाटर मैनेजमेंट का, इसमें ना ये क्लीन वाटर है, फिर वेस्ट वाटर, दोनों भी है. सो अभी मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ. यस. तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेस्ट वाटर है, अभी तो ऐसे कोई पॉलिसी नहीं है जो इट रिक्वायर्स द वेस्ट वाटर टू बी गोइंग ओनली इन, नॉट बी रिलीज्ड इन द रेन वाटर स्ट्रीम और रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड्स. ओपन ड्रेनेज सिस्टम है,
या central drainage system है. So there is a system that is not working well because as we see this problem, the water, drinking water, rainwater is getting contaminated. So today's topic, all that was related to the same thing. So to address this issue, I have a solution. And now what if the policy intervention happens and we say, okay, policy is there, no more wastewater release into the open, no open drainage system, no lakes and ponds and rivers contamination, no drinking water contamination, river water, rainwater contamination. Let's say we introduce this policy. Then naturally people and our political leaders will ask, what is the solution? So here I have a solution. It's not here in India yet. This is the solution in US. It's been in place for more than 30 years. Very reliable system and addresses mass population very easily. So I want this company to come here and partner in India, and we introduce this technology here. So here it is. Without further ado, I'll present this. So it is it is a stackable tank. So tank is normally जो rotational molding होता है, बड़े tanks होते हैं, वो लॉरी में 1 या 2 tanks बैठते हैं, फिर बाकी सब empty space होता है. So there is no room for transportation cost बहुत ज़्यादा होता है. और warehouse space और जो hardware shops है, hardware shops के सामने बड़े tanks लगे हुए होते हैं for sale. So उनका space पूरा निकल जाता है. तो ये टैंक जो है, this is a 675 liters टैंक है, इतना बड़ा सा टैंक है. ये अपने जो शादियों में फंक्शंस में ये अपने चेयर्स जो स्टैक होते हैं, प्लास्टिक चेयर्स तो स्टैक करके रखते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट है ये. सो ट्रांसपोर्टेशन का इंस्टॉल कॉस्ट काफी कम होता है. सो यू कैन स्टैक, एक लॉरी में जो 2 टैंक बैठते हैं, उसी ये 50-50 टैंक्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक ही बार. कहीं सो रूरल एरिया हो, कहीं भी हो, ये टैंक अपना ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो ये काफी असेंबली काफी इजी है. जैसे 2 टैंक लिया, एक टैंक के अंदर एक टैंक है, स्टैक है, वो स्टैक को पलटाया और एक टैंक बन गया. सो ये अल्टरनेट टैंक होता है. एक लेयर में होल होता है जो मैन होल के लिए, और दूसरे उसमें सॉलिड होता है. सो इफ व्हेन यू असेंबल दोस टू, इट बिकम्स अ टैंक विद अ मैन होल. सो ये टेक्नोलॉजी जो है एक सिंगल पीस है, और असेंबली जो है क्लिप्स, बीच में एक सीलेंट होता है और क्लिप्स होते हैं, और ये 30 इयर्स भी चलता है सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड. और ओवरहेड भी ये पोर्टेबल टैंक ओवरहेड भी यूज कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी यूज कर सकते हैं. ये ब्लू कलर का टैंक जो होता है वाटर के लिए, क्लीन वाटर, और ब्लैक कलर का जो होता है सेप्टिक टैंक के लिए. और सेप्टिक टैंक जो है वो उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वो इट इज लाइक वेरी कम्बरसम टू बिल्ड. जो काफी लॉट ऑफ कॉन्क्रीट, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब करना पड़ता है, और ये काफी टीडियस है. सो इसमें ये टैंक सिस्टम जो प्लास्टिक का टैंक है, उसमें क्या होता है, सेप्टिक टैंक का इंस्टॉलेशन काफी इजी हो जाता है. छोटे टैंक भी है, सबसे बड़ा टैंक जो है 6000 लीटर्स के भी है, और छोटे टैंक भी है 100 लीटर्स के भी है, 150 लीटर्स के लिए भी है, 300 लीटर्स के लिए भी है. छोटे टैंक्स भी अवेलेबल है. सो ये वाटर टेबल बढ़ाता है. जैसे सेप्टिक टैंक के लिए वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, फिर वाटर टेबल बढ़ जाता है, फिर क्लीन होता है. सो इट्स नॉट एक्सपोज्ड आउटसाइड, सो नो ओपन, सो नो मलेरिया, नो कोलेरा, नो दिस हेपेटाइटिस, ये सब डिजीजेस के चांसेस पूरे निकल जाएंगे, क्योंकि वाटर एक्सपोज नहीं है. और ये ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया. ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है. और ये ऐसे जैसे स्टैक जैसे आता है, और इसमें ये सेप्टिक टैंक एक कुछ चीज होता है, और एक चीज है कि ये दिस इज कॉल्ड लीच फील्ड. जो ब्लैक कलर का चीज है, ये लीच फील्ड है, जो यहाँ पर ये ट्रक में अनलोड किया जा रहा है. स्टैक ऑफ लीच फील्ड्स है. इसमें क्या होता है, ये सेप्टिक टैंक से जो सॉलिड जो है, सॉलिड सेप्टिक टैंक्स में रह जाता है, उसमें बैक्टीरिया जो भी है वो खा लेता है अंदर टैंक के अंदर. फिर बाहर जो भी पानी निकलता है, that goes under this leach field. So leach field से पानी प्यूरिफिकेशन होके वाटर टेबल बढ़ाता है, थोड़ा वाटर एवापोरेट होता है, पर ज्यादातर वाटर टेबल में जाता है, फिर वापस बढ़ाता है. सो ये है ये टेक्नोलॉजी. सो ये ब्रीफली में 10 मिनट का टाइम मिला, क्विकली मैंने शेयर किया. फिर उसके बाद जो ये वाटर का प्रॉब्लम है, ये वाटर अनप्यूरिफाइड, जो वाटर कंटेमिनेशन, इसलिए क्या करते हैं सब लोग,
जो एफर्ट कर सकते हैं आरओ सिस्टम लगाते हैं घर में। सो आरओ सिस्टम से क्या होता है, जैसे किसी ने बताया ऑलरेडी, मिनरल हितेश जी ने भी बताया, मिनरल्स पूरे निकल जाते हैं जो सो हेल्थ के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है। सो काफ़ी लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, जॉइंट पेन्स, बॉडी पेन्स, बोन्स वीक होते हैं, सो काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके लिए भी और एक सोल्यूशन है, जैसे ये जापान में यूज़ होता है, इसका नाम है केंगन वाटर है। इसमें क्या होता है, प्लैटिनम प्लेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करता है वाटर। सो जो भी वाटर है वो वाटर को चार्ज करता है। सो ये कैंसर डिजीज के लिए क्यूर करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंडिया में भी आ चुका है। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मेरा शायद 10 मिनट का टाइम हो गया, तो इसमें मैं समरी ये करना चाहता हूँ कि पॉलिसी इंटरवेंशन की काफ़ी ज़रूरत है कि वी मैंडेट और पॉलिटिकल लीडर्स कम अप, say that no more water, open water, no more water in the contamination of the drinking water, no more water, wastewater going into rainwater stream, rivers or lakes or ponds. All that should be fresh water. So that is one mandate. So we can implement that, and now we have a solution. We can introduce this as a solution. And the second one is to have health benefits with using this Kangen water in hospitals where to cure cancer. And also my house, I have a Kangen water. I've been using it for like 2-3 years now, and it's caused very health. I'm 40 years old, and I still drinking this water, I feel healthy, I feel young, I feel energetic. So ये water काफी helpful है. So this is if you जो अपना और एक SALDP graduate है नरेंद्र कुंबाला, जो हितेश जी को काफी अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया ये आयोनाइज्ड वाटर के लिए बारे में, काफी विस्तार से बताया। सो हम दोनों को संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में, मुझे या कुंभाला जी से। और ये टैंक जो ऊपर मैंने प्रेजेंट किया, इस टैंक ये सिस्टम को, ये टैंक सिस्टम को इंडिया ले आने के लिए कोई फंडिंग हो या कोई पार्टनरशिप करना चाहता है पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए या ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मेरा एक्सपर्टीज है, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प एंड हैप्पी टू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी टू इंडिया। आई एम हियर टू सर्व द नेशन and be here. So I'm open for this opportunity. Thank you, sir. Definitely, we will include this in our meeting with Gopal Krishna ji. If this technology is really helpful in solving the water-related issues, so why not? Why not to implement that? So we'll definitely be in touch, Rakshit ji. And this platform for water, clean water and sanitation, goal number 6, will be launched by 22nd October. So kindly regularly participate in that. We want a holistic solution for all geographical areas and demographies. So somewhere this can only happen if we continuously discuss about it and find all the areas, dots which we need to connect. So thanks a lot, Rakshit ji. In such a short span of time, you have made your point, and it is very good to see SLDP graduates doing such things at the technical front. And I would recommend that you join SALN once it is launched on 22nd of October. Thank you. Thank you, Rakshit ji. Rakshit ji, one question from you. What exactly the Kangen means? Kangen means it's a word, Japanese word. The meaning is back to origin. जो पानी जो originally निकलता है जो from the mountains and glaciers, or that back to the origin. So with the rich minerals and nutrients, when we take the water back to origin, the Japanese word means that. Exactly. That's why we have to work, rather than working on this Kangen water purifiers, we have to work on the water resources to keep it clean so that we don't require any type of water purifiers. Because at the end of the day, they are some problem to the society. But if we resolve and go back to the origin, what exactly the Kangen means, that will be a bigger solution. I think we have to work on that. Yes. Exactly. Rakshit ji, there is one more question for you from Mr. PKSG, after which we will go to our next extempore speaker, Mr. Sanjeeva Gandhi ji. So this question is from PKSG, Bangalore. He is saying that where he is living has 8 apartments and drinking water is supplied by municipality truck. If suffice the drinking requirement, it suffices the drinking requirement. The used water from bathroom and kitchen is purified and circulated for the same.
Further, liquid and green waste goes converted in compost. So this is simple solution. So what is your reaction on this? So that is excellent solution. That is also sounds sustainable, and you are using the water and also disposing the water very clean way. So that is definitely a solution, good solution. Yes, and we want to have more of such solutions, and sustainable, that can run for decades. Once installed, once we put that in place, the system in place, it works for decades. Great. Great. So we will discuss all these solutions in the regular platform meetings, which we call as SALN conference. So in SALN conference, we will discuss about the technical aspect. Thanks a lot, Rakshit ji. Thanks for your inputs to this goal. Now, I would like to invite Mr. Sanjeeva Gandhi, M, who was initially allocated the slot for the 45-minute session, but now due to the paucity of time, we'll have only 10-minute session from Sanjeeva Gandhi ji. Sanjeeva ji, kindly introduce yourself and give your presentation. Okay, thank you, Sanjeeva sir. जी, आप ओपन कर सकते हैं वीडियो. You can open your video. Okay, your banner is visible, but you're not visible. कुछ कैमरा के ऊपर शायद कुछ लगा हुआ है. Sanjeeva ji. Yes, sir. Yes, sir. Is it audible, sir? It's audible, but your video is not visible. Just a minute, sir. And in the meantime, I would also request Mr. BK Sanjay ji to see if his audio is now working properly. BK Sanjay ji, आपकी ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए. ओके, तो जब तक संजीवा गांधी जी अपना वीडियो ठीक करते हैं, I want to give a message to all the people who are working in the domain of goal number 6, clean water and sanitation, to join hands with us and be part of Project YugParivartan Synergy Platform. To know more about Project YugParivartan Synergy Platform, I'll just give you a video link. You can go through that. What exactly is the Synergy Platform all about? The Synergy Platform was launched. I feel if it is not long, you should run it so that the people can see it here. It's a 1 hour video, so no, it will be too long. They will see it. They can see it later on. Okay. So here it goes. I have shared the link. So all those who want to become part of this revolution called as Project YugParivartan, kindly go through this Synergy Platform. There is a place for everyone. All the possibilities are explained in the video to a great extent. And once you are fine with this overall concept and feel that you should join us, then kindly contact us on WhatsApp number. I'm just sharing the WhatsApp number as well. संजीवा जी, आपका वो रेडी हो गया? Video, I don't know, sir. I think some setting is. Okay, कोई बात नहीं. आपके पास presentation तो नहीं है ना कोई? Shall I share my slide share, sir? Screen share करके आप presentation चला दीजिए और अपनी बात बोल दीजिए. It is 2:35, so 10 minutes में 2:45 तक आपको ये close करना होगा. Is it visible, sir? My PPT? Yes, your presentation is visible. Okay. Actually, sorry for the inconvenience. It's a morning section. I'm unable to take up. So I'm basically Dr. M. Sanjeev Gandhi, working as assistant professor in SRM Institute of Science and Technologies. I have 10 years of experience in research and teaching. I have completed BSc MSc degree from Tamil Nadu Agriculture University and PhD from Tamil Nadu Agriculture University. And during my PhD, I worked as industrial wastewater treatment for agriculture purpose. So recycling of the industrial wastewater treatments for crop growth. That is my basic research.
So during the PhD and during my postdoc, we developed a reactor to treat wastewater, and it will be fit for irrigation purpose and gardening purpose. So recently we tried to improve the reactors to treat the wastewaters to fit for drinking purpose qualities. Basically, my research experience, everything is related to development of non-thermal plasma for energy productions, nanomaterial synthesis, wastewater treatment, and air pollution control. It is a combined device that will treat all kinds of waste materials. So that's currently we are developing. I have collaboration with Jeju National University, South Korea, and University of Saskatchewan in Canada, in terms of research and students exchange programs. So basically, our goal in the clean water and sanitation, there is 6 goals and targets: safe and affordable drinking waters, and it should be available for every individuals and every children's. So that is the very basic aspect. So within this, there are several objectives. In our research background, everything is partially mingled with the target of the clean water and sanitation goals. So the basic water availability in our earth, we know that 70% of water covered on the earth and 30% is only land surface. So within the 70% of the water surface, around 97% of the water source salt content, that is ocean waters. Only 3% is fresh water. Within the 3%, 2% of water is not fit because of that is glacial and polar ice caps. So that is not fit for, not available for consumption. So only 1% of fresh water is available for our human consumption. So in this case, we realize the importance of the water, and that's we moved some research related to water treatment, recycling, everything. So our annual precipitation is around 4,000 billion cubic meter. And the available water resources is around 1,869 billion cubic meter, around 46.7%. And whatever they available, and currently we are utilizing around 60% available resources and 40% the groundwater resources. So we are over exploitations of groundwater. We are the first place in the world currently over exploitation of available groundwaters. When compared to the recharge level, it is very, very less. So in addition to this, as we know that agriculture is one of the main backbone for our GDP in India. So currently in India, agriculture sectors is utilizing around 90% of the available fresh waters, and domestic around 9% and industrial around 2%. So the surface water, the usage of surface water for agriculture purpose is very huge high. But at the same time, when compared to other countries, how much they are utilizing, when we compare the comparisons, how much cultivation, how much cultivable areas, how much water we are using, and how much water foreign countries are using, our water usage pattern is very, very critical situations. Around 90% of the waters, only 20 to 30% is reached into the agriculture crops. Remaining 60% of the water is going to be a waste one. So we realize the importance of the waters, and then the consumption of huge consumption of water in our nation. So my additional objectives is we should know the virtual water concepts.
Usually virtual water means the hidden water in the products. For example, if we cultivate rice, we usually calculate how much expenditure we spend and how much gain we got it. For example, cost of cultivations. But recently, most of the countries, they are calculating the hidden waters from the cultivation to up to end of the stages of harvesting, post harvesting, transport, and then marketing, and then reaching to the consumers. So up to this level, if you take 1 kg of rice, it will take at least 300 liters of water for the productions. So if you consider 1 cup of coffee, it need at least 140 liters of water. At the same time, 1 kg of rice, 1 kg of sugarcane, wheat, these all are oil water consuming crops. Currently, we are producing and we are exporting. So virtual concept means we have to consider how much amount of water we are spending and how much amount of water we are exporting along with the materials. For example, 10 kg of rice we are exporting to any other countries means we have to calculate how much water we are spending, and that is also one of the concept we want to focus, and farmers should understand how much, what are all the modern tools. I mean the drip irrigation method. These days several advanced irrigation methods are also available. So in addition to this wastewater treatment, I will directly go to my mission. Yes, you already focusing. So mostly usage of renewable energies in agriculture sectors, especially introduction of some modern tools to minimize the water usage. I mean the improper usage of waters in the agriculture sector. So if we introduce some modern tools like drip irrigation, laser irrigation, and several advanced methods, we can definitely reduce the huge amounts of water consumption in agriculture. That is one point. And another one, recycling of all kinds of waste materials, like our household waste materials. We can recycle our waste waters for flushing of toilets, or irrigation to the gardening, and car washing, or maybe again water harvesting, or maybe rainwater harvesting, something like that. So our my mission is every home they have TV, washing machine, refrigerator, car, like that. Likewise, every home here or that they should have the water recycling unit, so that they can effectively recycle the water for their benefit and betterment. That is one concept. And we can create at least a kitchen garden, home garden, by utilizing our terrace, or maybe if we have any backside, we can utilize such kind of place to grow our requirement. That means partially self-sustaining. We can grow our requirement by this kind of technologies. So either maybe we can establish a kitchen garden, or home garden, or terrace garden. That is also one of the concept. And then we have huge amounts of waste material. That means human waste materials. So we can convert them into either maybe biogas, or we can compost the human wastes and we can convert it into a biomanures. Rather than just firing or incinerating the waste materials, we can convert all kinds of even urine that is containing uric acid, so that we can, if we treat some primary or secondary treatment, we can utilize the human uric acid can be converted into a nutrient for the plant. And so these are all three objectives. So in my missions, so we developed this non-thermal plasma reactor to treat our household wastewaters. It means recycling, and
So likewise, I have several missions, but due to the short time, I could not explain in details. And finally, in my conclusions, we should create awareness among the farmers that they are wasting the waters, and then there are lots of modern technologies are available, and there are several subsidies are available if they are using drip irrigation, such kind of modern technologies. And at the same time, we have to promote harvesting of rainwater collection systems, watershed management systems, recycling of water for their own benefit, and then virtual water concept. Then only we can save our waters, and then in future also we can able to maintain the sustainable way of availability of water for our future generations. Great. Thanks, Sanjeeva Gandhiji, for a very quick presentation. 19 slides in 10 minutes. That's really amazing. And we would love to listen to you in further details and be part of the Project YugParivartan Synergy Platform. In SALN, we'll have one team dedicated to clean water and sanitation. So you can become an integral part of it and participate in all the discussion and creation of a holistic solution. Ultimately, what happens is when we produce some presentation, it looks good on the face value, and it shows a lot of hard work that has gone behind it to create it. But when it is related to the reality, many a times we find that it is not actually producing the right solution. So somewhere there is a gap, and the purpose of SALN is to fix that gap by helping both parties, the receivers and the providers, to arrive at a solution. Similarly, if you see a question that has come to us, also depicts the same challenge, that although there are several policy frameworks, yojanas and all, but nothing substantial happens on the ground. We are not hopeless that nothing, actually literally nothing happens. A lot of things happen. A lot of things keep changing for the betterment. But still in the 21st century, clean water and sanitation has not reached to that level wherein we can say that, yes, this particular aspect of human life management we have taken care. So one question has come, any panelist can answer that. Namami Gange project started in 2014. And now almost 7 years are going to be completed. What % of project is completed, first of all? So what is the status of that? And how long will it take to get completed? When cleaning Yamuna project will start? So Yamuna also, we all know that it is a very dirty river now. It passes through the national capital, Delhi. And yet you can see that as more of a drain rather than as a river. So when its project of cleaning Yamuna will start, and how can we help in these projects to be completed as soon as possible? Because on the one hand, in India, we consider these rivers as mother or as something which is worshipable, right? But on the other hand, we keep them very dirty. On the other hand, in Western world and other developed countries, they don't relate the physical things like rivers as any deity or anything to any object of worshipping, but yet they keep their rivers very clean. So somewhere we have gone into a wrong direction in managing our river resources. So what do you have to say about it? Anyone? I would suggest, I would direct to our policies. The policies we have in the US, the policy demands that there's septic tanks in decentralized wastewater regions. So the urban system, there is a centralized wastewater system like drainage system, but there is many parts of India do not have any centralized drainage system. So for those people, the only choice for them
and the municipality is okay, is the water to go into the stream where the rainwater, fresh water is available. So the main thing here is the policy, which I think is the only way we, like, just like traffic light, we put red light and there's nobody goes through red light, and if somebody does, they get a fine. The camera is there and takes a picture, sends a fine to the home, and they're fined. They lose their license or vehicle if they continue doing that. So the law enforcement policy demands the law enforcement in this wastewater also. We can protect our dear rivers. Good. So all such similar things will be discussed in the SALN conference. For now, we'll just have a clue of that, yes, something can be done regarding this. It's not something which is not doable. So a lot of citizen participation, and as our one of the partners, responsible citizens, say that when the citizens become responsible, several of the government policies would be in line with our expectations, and the implementation will also see the light of the day. So we will definitely invite you, Rakshit ji, into the platform to discuss it further. Thank you. Any other question, anyone? Any question to any of the panelists? We have Sanjeeva Gandhi ji available, Rakshit Amba ji, and Mr. B.K. Sanjay, Mr. Upendra Dhonde. Okay, so it seems there is no more question. So I would like to invite my colleague, Mr. Arvind Tiwari ji, to finally give the vote of thanks. Of course, there are few extempore additions to the event today, so you may not have the script prepared, but you are master in giving the extempore vote of thanks as well. So over to you, Arvind ji. Give a formal vote of thanks, and then we will talk about tomorrow's agenda. Yeah. थैंक यू हितेश जी। तो सबसे पहले तो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि प्रमोद, ये गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी से भी एफिलिएट करते हैं, लेकिन उससे अतिरिक्त भी वो जल के क्षेत्र में जलाधिकार के माध्यम से काफी गहन और सूक्ष्म स्तर पे कार्य कर रहे हैं, जो कि लोगों ने देखा आज की प्रस्तुति में। उसके बाद जो हमारे अगली प्रस्तुतियां आई थी, उसमें उन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया, सोलर लैम्प, सोलर पावर, इन सब चीजों को देख करके वो अपने आप में काफी अच्छा कार्य था, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं समय की कमी के कारण हितेश जी सीधे एक्सटेम्पोर करूं कि पढ़ करके करूं? मैं जिनका लिखित में है तो आप वो पढ़ लीजिए, बाकी लोगों का आपको ऐड करना होगा। ठीक है। So vote of thanks, as formally we give, is in English. So I'm reading, then I'll come to the people who have already joined and given the valuable inputs. Vote of thanks. Today's Summit SLN 2021 on the Goal 6 of United Nations SDG on clean water. Our Hitesh Chandel ji, who is Chief Mentor also, an honorable Chief Guest and Guest Speaker, dearest team members, and our most valued participants. A pleasant afternoon to this wonderful gathering. I, Arvind Tiwari, an integral team member of Project YugParivartan team, feel privileged to propose a vote of thanks. And I'm really privileged that for the last 3 days, I'm doing it continuously. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. And it was being visible with some of the speakers who actually spoke, and it was very visible that they were living it. First and foremost, we thank the Lord Almighty, who has designed and refreshed our souls with a sweet stream of blessings. Thank you, Lord. We express our gratitude to Honorable Guruji, Chief Mentor Hitesh Chandel ji, to organize such a wonderful event on this virtual platform as part of Project YugParivartan. His incredible leadership, timely and proper advice, and the freedom in decision making provided us with the opportunity to conduct the summit. We have been fortunate enough to have eminent persons from the different regions to share their views on the Goal 6 of United Nations SDG. We have been fortunate enough to have eminent persons from the different regions to share their views on the Goal 6 of United Nations SDG.
clean water and sanitation of United Nations Sustainable Development Goals. We are sure that the participants must have benefited by attending the 8th day of this 24 days, today's 9th day, 24 days Self-Actualized Leaders Network Summit. I must mention our deep sense of appreciation for Sri Gopal Krishna Agarwal for multifaceted talent of being a CA, a politician, and a technical expert in UN SDG Goal 6, clean water and sanitation. And it was very obvious with his presentation I was telling earlier. Further, we are grateful to Mr. B.K. Sanjay and his colleague for demonstrating his deep understanding on the subject of clean water and sanitation from his perspective. It was really due to some technical snag, we could not listen to him properly, but his colleague, what he was telling has been done actually on the ground is really commendable. And I think it requires appreciation, though it was not connected directly with the clean water, but it was connected with the rural aspect and rural area upliftment. And it was a tremendous thing. It is also our pleasure to see Mr. Upendra Dada Dhonde sharing a sense of understanding on the important subject of clean water and sanitation. Dr. Dhonde, Dada Dhonde, Upendra, why is known as Dada? I wanted to ask it, but I think he is known Dada because of his work and involvement and commitment in the field in which he is involved despite his services. So we'll get the time and we'll definitely ask why he is called Upendra Dada. Sir, here I am available here, sir, to tell that. Yeah, I'll ask. Dada in Maharashtra, Dada is called to Big Brother. So Big Brother always takes care of youngsters. My work is primarily oriented towards youth. My major followers and major participants are from youth. And as they are younger to me, they used to call me Dada. So that has become Upendra Dada. So it has come as now you have become Upendra Dada Dhonde. Yes, yes. Okay, so wonderful. Hearty gratitude to all the speakers who generously accepted our invitation, and especially to those who came at the last minute and gave their valuable inputs, and especially Sanjay Gandhi ji and Rakshit Amba, both, because they came and they gave really vital inputs, spared their precious time from busy schedules and shared their valuable knowledge and expertise with us. Thank you, dear sirs. I hope all participants today would have gained a lot of insights into the deep subject of clean water and sanitation. And I'm sure that the upcoming days of the summit will bring a lot of value to every participant's life. With this, I would like to hand over the mic to Chief Mentor Hitesh Chandel to inform the audience about the agenda of tomorrow's sessions and then formally close today's session. Over to you, Hitesh ji. Thank you, Arvind ji. And as I mentioned on the chat box also, tomorrow we will be covering the goal number 7 of UNSDG, affordable and clean energy. We have a good lineup of speakers tomorrow as well. We'll start with the context setting and Project YugParivartan Synergy meditation. From 11:30 to 12, we will have address by Chief Guest Dr. Malini Goyal, who is convener of India Energy Forum and is also an IIT Delhi alumnus. Then from 12 p.m. to 12:45 p.m., we will have a session by Mr. Abhishek Gupta, who is also a partner in Optimus Resolution, which works in the domain of clean energy. Then from 12:45 to 1:30, we will have a session by Mr. Gokul Krishna R, who is co-founder and director of Venusa Enterprise Private Limited, who is also dealing with the clean energy domain. And from 1:30 to 2:15, we will have a session by Mr. Yogesh S. Pandey, who is a certified energy auditor of Government of India. So with the lineup of the 4 eminent guest speakers tomorrow, we will get acquainted with the knowledge related to affordable and clean energy, which is goal number 7 and which is a burning need of humanity at this moment. Because the planet is completely into pollution, due to which a lot of climate change is happening, resulting into a cascaded effect
on various aspects of sustainability. So it is important that we should have clean energy, and it should also be affordable, because if it is not affordable, then it will have impact on every other business domain. The price rise, the commodity price rise will happen if we do not have an affordable energy, and adoption to the new technology, clean energy, will not happen if it is not affordable for the small businesses. So a lot of new learning will happen tomorrow. So we invite all of you to join us at sharp 11 a.m. tomorrow as well, and learn as much as possible through all the speakers who come with the expertise in their particular domain. And I would also like to remind you that on 23rd, we will be conducting the Self-Actualized Leadership Masterclass for 1.5 hours before we do the 2 hours dedicated candid conversations with me directly related to Project YugParivartan, self-actualization, SALN, or any other terminology that is associated with the overall scheme of things. So with this, I thank all of you. All the participants have been wonderful. They have been consistent since several days, and I hope they will empower us for the upcoming days of the summit as well. Thanks a lot. Dhanyavad. Namaskar. Shukriya. Bye.